इवनिंग चाओ चाओ कैसे हो आप लोग। इंटरनेशनल ब्रेक इज ऑलमोस्ट ओवर यार। थोड़ा ही मतलब 3 दिन बाकी है, उसके बाद वी आर बैक टू क्लब फुटबॉल। आई फॉर वन कांट वेट एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी क्लब फुटबॉल का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में यार सच में दिमाग का दही होता है यार। एक तो सारे मतलब मेरे हिसाब से नेशंस लीग के गेम्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, इंडिया का वियतनाम के साथ में एक फ्रेंडली हुआ जहाँ पे ऑफ कोर्स यू हैड फारूक चौधरी स्कोर अ गोल, बट अदरवाइज इंडिया ओनली प्लेड वन गेम इन द इंटरनेशनल ब्रेक। आई एम अज्यूमिंग कि यार हम सब इंटरनेशनल टीम को सपोर्ट करते हैं, बट मैं ऑफ कोर्स इटली को भी सपोर्ट करता हूँ अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली। एंड आई एम श्योर कि आप लोग के भी इंटरनेशनल टीम्स रहेंगे, लेकिन सच में यार बोर होते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में। इट इज नथिंग कंपेयर टू क्लब फुटबॉल। मतलब जो आपको खुशी मिलती है क्लब फुटबॉल में यार, इट्स समथिंग एल्स यार, इट्स अनपैरेलल्ड। एंड कुछ ही दिनों की बात है, वी विल बी बैक टू रेगुलर प्रोग्रामिंग। आई एम सो हैप्पी। लेट्स सी हूज इन द चैट। जेनेट्रॉन इज हियर, कैसे हो भाई? Ravi is here. How are you, Ravi? Zenatron, I do not know why, but seeing a Maldini not playing in defense felt strange. It is actually Zenatron. आप जाके कैल्चो चर्चा पे माल्दीनी का वीडियो चेक कीजिए, माल्दीनी डायनेस्टी पे जो हम लोग ने किया था, जहाँ पे we spoke about Cesare Maldini, then of course the great Paolo Maldini, and now Daniel Maldini. But the fun fact is दैट डैनियल मैल्डिनी का सबसे पहले जो क्लिप वायरल हुआ था उस समय में यूट्यूब में 2009 की बात है, जब वो 500,000 व्यूज आया उसको, was Daniel Maldini tackling, मतलब he was what maybe 7 years of age, टैकलिंग क्लैरेंस सीडॉफ। वो है वीडियो में, जाके देखो। तो हमको लगा कि भाई मतलब डैनियल मैल्डिनी विल कैरी फॉरवर्ड हिज फादर्स लेगेसी एंड प्ले एज अ डिफेंडर, but he turned out to be an attacking midfielder and I for one rate him. कोई रेट करे या ना करे, मैं तो उसको रेट करता हूँ। बहुत टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है and he's got a very good start for Monza this year, and which is why he was called up, and he was good against Israel last night. Italy versus Israel brought back some memories of the 1940s. Yeah, we will get to that. Sheza Hassan, I'm a Barca fan. I don't know why I'm here. Well, if you like football, I'm happy that you're here because I love football. I love the game. मेरे लिए तो भाई रोटी कपड़ा और फुटबॉल है, ये the three most important things in my life. Basic needs in life is roti, kapda, football. So if you're a football fan, I'm glad that you've joined in. It doesn't matter, to be honest, in the larger scope of things. Whoever you support, yeah, you can support Barca, Real, Liverpool, United, Roma, Lazio. I know Lazio, and it's fine. I mean, जो 90 minutes में जो bantering चलता है, जो on pitch चलता है, that's fine. But end of the day, I think we love the sport, which is football. So which is why I'm really happy all of you are here. Zenatron hits it. This is for every football fan and sports fan, man. I mean, वो आदिदास का जो है ना, all day I dream about sports. I think that fits me very well because बचपन से ही क्रिकेट तो था ही, because obviously मैं 90s में grow up किया हूँ, तो you had a very strong connection to that era, especially when Saurav Ganguly and Rahul Dravid made their debut in England. It was really amazing because finally we had a winning team after a long time. मतलब मैं जब क्रिकेट देखने शुरू किया था तो सचिन आउट होता था, मतलब पूरा टीम खत्म हो जाता था। बट जो इरा बाद में आया, स्पेशली जो दादा ने कैप्टेंसी लिया भाई साहब, सो भले वो क्रिकेट हो, फॉर्मूला 1 में देखता था, F1 में शूमैकर हैकेनेन का राइवलरी चल रहा था उस समय पे, एंड देन फुटबॉल आल्सो केम इन एट द सेम टाइम। टेनिस तो था ही उस समय में, एंड्रे अगासी, पीट सैम्प्रास का राइवलरी था, जो आज आप बोल सकते हो कि हाँ, जो नडाल, फेडरर, जोकोविच का जो था, दैट टाइम इट वाज एंड्रे अगासी एंड पीट सैम्प्रास। सो स्पोर्ट यार, मतलब दिस इज फॉर ऑल स्पोर्ट्स फैंस। collab with Drog Baba, yaar, let me know. Drog Baba is such a nice guy, very मतलब क्या बोल रहे हो, one of the most nicest people that you can come across, and very down to earth and very chill to work with. आराम से, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है. He's a such an accomplished content creator, but he's got no airs about himself. Very very cool guy to work with, and I'm looking forward to creating more content with him. पोलैंड को देखना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। लेवेंडोव्स्की को सर्विस मिलती नहीं है, बट 80 प्लस गोल्स कैसे मार लिया पोलैंड ने, बिकॉज लेवेंडोव्स्की इज अ स्टार यार। आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से वन ऑफ द टॉप गोट्स ऑफ अ जनरेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स। एंड पोलैंड के लिए यार, सी पोलैंड आर नॉट अ बैड टीम एंड दे एक्चुअली डू वेल इन क्वालिफायर्स, बट इन द मेन टूर्नामेंट्स इज वेयर पोलैंड आके हक देती है सच में।
तो अगर आप देखोगे, you have Zelensky, you have Zalewski, you know, who actually play well in the qualifiers, but I don't know what happens to them in the main tournaments. Italy national team का content है, and we'll get to it right away. In like 2 minutes, we'll get to the Italian national team. But there's Calcio Churcha also, where we speak about Italian football. So head over there. Steffi Graf, yep, Steffi Graf dominated women's tennis back then, man. So happy that Agassi and Steffi Graf got married. But let's get to it with some breaking news. Actually, my ये breaking news was not part of my build-up, but it just came up. Thomas Tuchel for England. I mean, Sky Sports is reporting this. This is the article. Of course, Guardiola तो था ही as a candidate, and Guardiola also अपने press conference में आके बोल रहा था कि भाई, you know, I may he was very मतलब he was not leaving any hints per se. But it looks like Guardiola will not continue with City, but he's not going to take the England manager's job. So Tuchel है, and इसपे वही लिखा है कि FA have accelerated their search to name Gareth Southgate's successor. And Thomas Tuchel is being approached. This is the article. So this would be very interesting. I mean, share your thoughts about this, because Thomas Tuchel मुझे सच में लगा कि he will take a club job after this, given that, you know, what has happened with his previous experiences. I feel that Tuchel is a good cup manager. Cup manager, so hey, he's a good cup manager. But I felt that maybe we would probably see him in a club role, because so many clubs maybe in the summer will look for a new manager. I'm not saying a particular club, but it could be Man United. I'm sure that even Milan and Roma would have some vacancies coming up in the future. So मेरे को लगा, and probably Ancelotti also might leave Real Madrid after this. So I felt that Tuchel probably would have been like an ideal replacement for one of these clubs, but I think it's going to happen that he's going to take over the England job. Yeah, it almost seems like it's done. And yeah, he's a good cup manager. His record in UCL is excellent, and he won the German Cup also. So yeah, Ravi, that's the thing, right? He's a good cup manager, but I think he also thrives on long-term projects. Like अगर आप club को कुछ दोगे ना, मतलब एक goal दोगे, I think Tuchel is the guy to kind of like lead that project. So I would be disappointed to see him personally go to England, because I feel that maybe he has a few more years of club football left in him before he actually takes up the national team role. Yeah, right? I feel that वो करना चाहिए वो. Gopinath, we want to watch along with Anubhuti for the Roma Lazio game. Yeah, actually, Gopinath, the Derby della Capitale is in January, the first game. So we will have that. It's going to be a lot of fun. Trust me. I'm very superstitious when it comes to derbies. Most of our derbies मैं छुपके से देखता हूँ when Roma win. The derbies that I have watched properly, Roma have lost. So I'm a little bit superstitious on derby, but let us cross the bridge once we get to it. मैं अपन देखेंगे अपन. शहजाब है कि never thought I'll find a AS Roma fans. Yep, Menace in the Monk पे हम लोग of course Serie A को rep करते थे, and they're the guys who actually kind of pushed us to do our own channel. So yeah, we have some Serie A fans. Serie A was, you know, the dominant league in the early 2000s, but ठीक है, उसके बाद में Premier League आ गया. A good move, to be honest. Real Madrid seems to be sold on Xabi Alonso. Yeah, it makes sense for him, you know, to come back to Spain and coach Madrid after his time with Leverkusen. And I have Param joining in with me. Ciao, Param. What's up? What's up? कैसे हो अजय भाई? क्या डिस्कस कर रहे? All good. So just was breaking the news of Thomas Tuchel actually being the front runner for the England job. As of now. Yeah, I saw that. I mean, I know he's I think obviously we know कि वो cups में तो अच्छा करता है, but I have personally not been a big Thomas Tuchel fan ever. मुझे पसंद नहीं है वो. I just don't like managers that are not good with their man management, and I know there is more to football coaching than just man management. But I have never been a fan, because like मैं उसका career Mainz के days से देख रहा हूँ before Dortmund. Yeah. Never liked the guy. And I know he did win the UCL with Chelsea, and of course he did he's a good cup manager. He's a cup manager, but I think his man manage मतलब है अच्छा उसमें, but I just feel personality wise he's not someone I'm a fan of. मतलब,
And with this England job, again, at the end of the day, on paper, you can see it turning out to be a good thing because obviously England के पास players इतने अच्छे हैं. Yeah, But and obviously he can also make it work. But I have my early doubts. I do feel he might win something if he's hired. एक trophy निकाल लेगा. But at the end of the day, Thomas Tuchel is that kind of a guy going into that kind of a national setup where there is something going on off the field all the time. Matlab with the players, I'm not saying it in a bad way or anything, but like you get what I mean. Like they're always in the limelight, and I feel somehow something. It feels that kind of an appointment where somehow something will happen eventually. Thomas yeah, Tuchel plus those English players. So I would be like, if I was an England national team fan, I would be like, from my perspective, I would say 60-40 acha hai. That's it. yeah. Personally, that's just because I don't like Thomas Tuchel that much. That's all. Maybe मैं Fair, थोड़ा ज़्यादा fair. critical हो रहा हूँ, but I personally never liked the guy. So फेयर 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 यार रवि, तेरा जो मालदीनी कमेंट है वो मैं बाद में लूंगा. एंड एम्बापे के बारे में मैं बात नहीं करूंगा भाई. अभी 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 यूट्यूब करियर शुरुआत किया है, वो बारे में अगर मैं बात करूँ यूट्यूब बैन कर देगी मुझे. बट हाँ, यू but नो apparently वो जो है वो fake news भी बोल रहा फेक है, है. फेक न्यूज है, फेक हाँ, न्यूज है, exactly. So whatever. Yeah. fake news. And Ravi, you're right, you're spot on. It is like Sven Göran actually coming to England. I was just going to say that only, ki very reminds me of that. But Sven actually had a higher pedigree than Tuchel, because Bhai Sahab, he coached for so many years before taking up the England job. Tuchel is Yeah. relatively young. I'm not saying he's not proven himself, but yeah, Hmm. I feel that Tuchel had a few more years as a club manager in him. Yeah, yeah. But Param, let's get to the games from last night, and we'll obviously start with the Azzurri. What do you? मैं फ्रांस का देखा ओवर अजूरी बिकॉज एक yesterday क्या था, I reached Of home course, late and I of was course. very tired to focus on 2 games. Usually I watch 2 games, but मेरा But दिमाग नहीं था to process 2 games, so I watched the France one. हाँ. Param, you have to look at this and just laugh. 9.1 rating, 2 goals. हाँ, डी Il लोरेंजो. Capitano. कुछ भी अभी वो मतलब this we need to show Yogesh here. We need to show it to him. ये तो मतलब I have no words. हीट मैप देख, उसका लौंडे का हीट मैप देख. पता नहीं Yeah. यही इमेज जाके वो स्पेलेटी को देके ब्लैकमेल, पता नहीं क्या है, कुछ Yeah. तो करता है वो, जिसके कारण Yeah. स्पेलेटी उसको पिक करते रहता है. एंड अभी वो अभी ये हाँ, ये परफॉर्मेंस के बाद सब जो उसने जितने भी उसने गलती का सब माफ है, क्योंकि सब इसराइल माफ को, हो गया. हाँ, इसराइल के 2 Yeah. गोल मारा, कैप्टन किया, तो खत्म. मतलब Yeah, I mean, I only saw highlights and read about this game, but obviously ratings aside, the star of the show mainly really was, of course, uh, this one, Fratesi and Di Marco, because they were really good. yes, Obviously, I'm not saying that as an Inter fan. वो तो था, Di Lorenzo तो था ही, obviously वो तो बोलना पड़ेगा, as much as I don't like the player. These three stood out. Bastoni calm था, from what I read. मतलब he took charge yeah, of the game from defense. Calafiori ठीक था, is what I read. He was not yeah, anything yeah. special. Calafiori was he was trying a bit too hard, because probably Yeah. opposition थोड़ा easier था on paper. Yeah. तो I think हाँ. मेरे हिसाब से वो ज्यादा ट्राई कर रहा था. बट फ्रटेसी का क्या रिकॉर्ड, 8 गोल यार, 8 गोल्स अंडर. वो ब्रेक करेगा मुझे लग रहा है ऑल टाइम स्कोरर का. इटली का ऑल टाइम स्कोरर बन जाए मुझे ऐसा लग रहा है. ही इज नॉट दैट फार ऑफ. जिस रेट पे वो मार रहा है, इट्स क्वाइट फनी की सिल्वियो पियोला और ये सब के बीच में फ्रतेजी पड़ा रहेगा. मतलब इट फील्स वेरी वियर्ड. Totti has got 9. Totti has got 9. But obviously he had a very short Italy career. De Rossi has got 21. So De Rossi is the highest midfielder, highest number of goals for a midfielder for De Rossi. But speaking of goal scorers, very happy to see Retegi continuing his goal scoring run. And of course, Lorenzo Luca, जो उदनेसे का ही प्लेयर है, कल का मैच उदने में था, तो he came on for his first cap, senior cap. So good to see. I think Retegi, what I heard was good also in terms of his work rate. He was very good. He had 2-3 chances, Param, वो hat-trick मार सकता था यार. I don't know why. I mean, he missed out a lot of chances. I think the one blemish जो आप बोल सकते हो, one poor performer was Fagioli. He lost the ball multiple times. Multiple times he lost the ball, and he was substituted at halftime for Samuel Ricci. मैं सुना रिची बहुत अच्छा खेला. Oh my God, he is. I am telling you, Guardiola
is watching Samuel Ricci day in and day out. And परम तू आने के लॉक. पहले अब तू बोलो आने बोलो. के पहले मैं सैमुअल रिची का पूरा मैं एनालिटिक्स पढ़ रहा था. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एफबी रेफ कंपेयरिंग हिम टू Hmm. रॉड्री फ्रॉम when Rodri was the same age as Ricci. Rodri's Hmm. last season at Villarreal and Hmm. Ricci's last season with Torino. You have to Hmm. compare कि Villarreal qualified for the Europa League Yeah. fifth में, but Yeah, I Ricci has remember. got some good numbers, and I think Yeah. he is probably I think Guardiola will get him at City. I feel. आई होप, मतलब चाहिए तो तुम लेके जाओ समर में इज द होप बेसिकली, नॉट इन जनवरी, बिकॉज आई डोंट वांट टोरिनो सीजन टू गेट ruined मोर देन इट ऑलरेडी इज गोइंग टू गेट ruined मोस्टली. सो भाई लेके जाना है तो आई नो वो लोग को चाहिए जनवरी में, but I hope it doesn't happen. And this is nothing against Manchester City. I just don't want Torino's season to get ruined, basically. क्योंकि आपको अब हम सब जानते हैं वो कायरो कुछ गधा प्लेयर ले लेगा, उठा लेगा. Yeah, yeah, He'll use that money to probably what get Simone Zaza and कुछ Get so Ciro that's Immobile yeah. back to Torino. Yeah, exactly. And खरीदेगा वो, पैसा उड़ाएगा तो परेडेस पे उड़ा देगा. I saw the links as well. Nico Shearer. Yes, yes. So Salah, I know he's going to waste the money. So I hope Richie stays it and completes the season at the least. But So, yeah, I mean, look, Italy I think has one foot in the door in terms of yeah, qualifying for the next Nations League round. So performance तो अच्छे रहे हैं. And it just again, मैं ना कभी भी वापस से फुल्ली ऑन द स्पेलेटी ट्रेन नहीं आने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ आई वी नो हिज एटीट्यूड अजय भाई. yeah, yeah, Fans who have had to bear him yeah. at our club. I'm never going to fully support him because he's a hypocrite at the end of the day. Kabhi to he's on a high, then he talks random shit. Yesterday I read he was praising Di Marco a lot, but then in the Euros he was the first to blame Inter players because they won the Scudetto too early, which makes no sense, Yeah, right? yeah, So, so I'm never good on him. What he's doing is right, but I would just say that I'm never going to fully support the guy. So just right. one second, Ajay, I'll just be back. Sure. I'll take your comments तब तक. आप लोग अपना comments definitely just keep on commenting. I will. Simone Zaza is playing, but obviously he's not playing professional football anymore. But पता नहीं यार, Torino might just get him back because Urbano Cairo जो है इनका president थोड़ा सरफिरा आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकता है. And if he manages to sell Ricci for money, for some good money, he will not know कि वो पैसे के साथ क्या करना चाहिए, to be honest. And you've seen it in the past, right? I mean, this season itself they sold Buongiorno for 40 odd million, but they haven't really reinvested that into the team. ठीक है, they got Che Adams, but apart from that, no real reinforcements. And yeah, I think that's an issue. And you're spot on, Ravi. ये सारे presidents अजीब रहते हैं, and रोमा के American owners भी यहाँ पे आके थोड़े सरफिरे हो गए, like the Italian presidents. It's sad. Some more comments. Random AI videos. Does the obsession with England's 1966 World Cup hinder the national team's progress due to unrealistic expectations from fans and the media? Look, see, England, with the prestige they've got, it's not like, okay, obviously they won the 66 World Cup, but the Premier League is the number one league in the world. Aap kuch bhi, you can, deny it, you can hate it, but that's a fact. So the spotlight is on the English Premier League. So automatically aapko expectation hota hai ki you want your national team to benefit from having, the most the number one league in the world, and hence there is a lot of pressure to perform well at these tournaments. Historically, yes, England haven't won a lot of trophies, but pressure is always going to be there. So, and it's not like they're producing bad players. I mean, they have produced some really good players over the years, the likes of, say, Gerrard, Lampard, John Terry, Wayne Rooney, uh, whoever. I mean, I'm just naming the golden generation, but even after that, also Jude Bellingham right now is, one of the top 10 talents in the world, if not like the top 8 or top 7. So there is a pressure to win, and unfortunately, they always fall flat. I don't know the reason, but I think they're not a cohesive unit. They can't win together, unfortunately. So, your thoughts, Param, on this? The England obsession to win the World Cup. I mean, I don't know about unrealistic in the sense कि अगर हम on paper quality और just general quality के बारे में बात भी करते हैं तो they obviously have a very strong team.
And it's not just the World Cup. I think it also comes down to the Euros, right? Because before you're talking about the World Cup, you need to first win the trophy, I feel, of your own confederation at one point. If you're good enough, which England तो है, right? अजय, मतलब अभी दो फाइनल की बात कर रहे हैं, दोनों हार गए. 100%, 100%. सो आई फील पहले तो बात करनी चाहिए यूरोस की. आई डू थिंक हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते ये लोग. बट ये जो नैरेटिव है ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडिया इज बैड, तुम Yeah, कहीं भी फुटबॉल में जाओ मीडिया उतना ही खराब रहता है. और इवन वर्स, आस्क अस इटालियन फैंस, द मीडिया इज हॉरिबल, राइट? सो माय थिंग इज फर्स्ट लेट्स सी इफ दे कैन win the Euros, because I think Southgate ने तो again I feel the criticism against him was a bit too much always. Sure, I understand एक तो जीतना चाहिए था, some of he also made mistakes, बट एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट आई वुड से हाँ पहले यूरोस जीतने दो, फिर वर्ल्ड कप के बारे में बात करते. बिकॉज वर्ल्ड कप, fair. आई नो देयर आर कंट्रीज फ्रॉम अदर कन्फेडरेशंस, बट इट्स वेरी इजी टू talk about winning a World Cup because there are other good countries outside UEFA. If we once Yeah, maybe ever talk about during in 2026, if let's say around the World Cup we talk about it, it's going to be very competitive even with 48 teams or whatever. So भाई वो तो अलग ही बात है, पहले इनको यूरोस जीतने दो, देन वी कैन हैव अ चैट. और ये मैं अजय, लेट मी बी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग कि श्योर दे कांट विन द वर्ल्ड कप बिफोर द यूरोस. हो सकता है अगर ये टुकेल आ जाए तो देन टेक्निकली इट इज स्टिल समवॉट ऑफ अ गुड फिट. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि सम ऑफ इट इज जस्टिफाइड बिकॉज लुक एट द क्वालिटी. आप प्लेयर्स देखो अजय भाई, अभी कितने बोलने की जरूरत है मुझे? बेलिंगम है, फोर्डन है, साका वही है, वही वही. पामर है, बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे ये सब, राइट? एंड it works. We know कि it's not like the pre 2010 England which on paper had all the players but it didn't work tactically, right? मतलब it was not that good. So वैसा भी नहीं है. This works tactically. So they have to. I'm sorry. मतलब कितना और excuse बनाओगे तुम उनके लिए? Fair, fair. Moving on, Param, to the next result. Obviously, this is the game that you watched, being a France Yeah. football fan. Your thoughts on this game? यार just one minute before I get into this game, since you brought up England, एक तो ग्रीस का मैच देख के मजा आ गया. I'm so Oh happy yeah, Greece won. Shout out to oh yeah. George Baldock also, who tragically lost his life, and they gave tribute to him. Greece Yeah. gave tribute to George Baldock, and yeah, that was good to see. And Greece क्या खेल रही है अजय भाई? I mean, they looks like they're going to probably finish above England, so kudos to them. But yeah, coming Kudos to to this them. game, yeah, France. स्टार्ट तो पूरा बेल्जियम था. दैट फर्स्ट हाफ बेल्जियम वाज द बेटर साइड. स्टार्ट आल्सो बेल्जियम वाज द बेटर टीम. मतलब बेल्जियम वाज टेकिंग इट टू अस, मतलब एकदम स्टार्ट से कांस्टेंट अटैक पे अटैक. एंड थोड़ा लूकस डीन ऑन द लेफ्ट वाज स्ट्रगलिंग. लूकस डीन हियर, मतलब he was in general the attack. Saliba had a horrible night. मतलब he was the worst player on the pitch. Saliba Yeah, he gave away the penalty penalty, दिया. na? हाँ पेनल्टी दिया हाफ टाइम के पहले. जो गोल फ्रांस ने कंसीड किया ओपेंडा का, ही कुड मार्क ओपेंडा. And in general he was terrible. And again, this is nothing against the player, but I'm just saying it as it is. He was horrible. And कोलो मुआनी फर्स्ट हाफ में कहीं नहीं दिख रहा था, बिकॉज आप देख सकते हो उसने मारे तो दो, बट फर्स्ट हाफ में तो देर वॉज नथिंग फॉर द गाय. एंड इवेंचुअली द गेम चेंज बेसिकली सेकेंड हाफ में आई सॉ कैसे हुआ ना बेसिकली व्हाई द गेम चेंज, बिकॉज फ्रांस स्कोर्ड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले. वी वर नॉट सपोज टू टेक द लीड एज पर हाउ द गेम वॉज गोइंग. और फ्रांस बेल्जियम अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे यही ट्रेंड रहा है कि बेल्जियम kind of outperforms and then France takes the lead based on quality against the run of play. So वही हुआ फिर से. and कोलोमुआनी penalty मारा, which of course gave France that confidence. and बेल्जियम, अब जानते हो बेल्जियम को अगर आप देखोगे ना जब लोग रैटल इजीली हो जाते हैं if they concede first after dominating. Right. They do not have that. अब देखो ना मिडफील्ड ही देखो, like it's okay at best. they do miss Amadou Onana of course. So और डिफेंस तो आप देख ही लो, मतलब वाउट फाइज भी कुछ खास, उसका तो हैंडबॉल था एक्चुअली for the first goal. So that's why we got the penalty. So they always fall apart, and kudos to France for showing their nerve. Manu Kone was actually good. Manu Kone was very solid. Suspension से वापस आ रहा था. For you as a Roma fan, बहुत अच्छा खेला. I liked his game. Matteo Guendouzi also was very solid. I was not a fan of Lucas Digne, as I said. मतलब easily beat हो रहा था, but Saliba again, as I kept saying, not the greatest. But Kolo Muani, I have to say, and Barcola, the maturity these two show being so young, Ajay, it's crazy. I have no words. मतलब especially for Barcola, मतलब जो maturity दिखा रहा है ये बंदा right now, it's too Boy is good. on It's too fire good. this season. Yeah, He's on fire this exactly. season. Yeah. And Kolo Muani की second goal भी like again, I'm just very impressed with how he's playing. And overall, I think we kind of deserve to win. We were the better team in the second half. And Belgium, में जैसे बोला, they got rattled, they lost their nerves, and then they just couldn't bounce back ever. Or Tielemans actually had a penalty,
to give Belgium the lead 0-0 पे, he skied it. So the signs were there कि नहीं Belgium नहीं probably जीतेगा ये match. So yeah, Fair. they weren't great basically. Apart from Openda, really no one really did that well. I'll be very honest with you. Jeremy Doku, sorry, I will give a shout out because we had discussed this, right? अजय भाई चिंतन में भी बोल रहे थे उसका सीजन Yeah. खास वैसा नहीं रहा है, but he did give problems, a lot of problems to Lucas Digne generally down that right hand side. So kudos to him as well. But apart from that, France, I think overall deserve to win this. Fair. Guys, आप आपके comments लाते रहो, अपन सारे comments लेंगे Yeah, towards yeah, the end. sure. Let me just quickly wrap up this Nations League uh, wrap up by itself. And another big game on the night actually was Germany हाँ, versus Netherlands. yeah. ये तो जो मतलब I sorry I couldn't watch this here, but या मैं भी highlights ही देखा इसका यार. yeah. What do you make of it? Even again, I saw the highlights. From what I heard, again, this is मेरी minimal knowledge से Jamie leveling. I'm not just saying he because he scored, but वो बहुत अच्छा खेला. I know he's having a good season as well, and actually it was good to see कि Nagelsmann ने वो risk लिया. Again, this is what kind of I do like about him कि वो ना he has a good sense of balance about whom to call up and not to this national team in general. मतलब जो फॉर्म में है सिर्फ फॉर्म के लिए नहीं बुलाते, बट ही नोज हाँ किसको मेरे को ड्रॉप करना है किसको नहीं करना है. सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. एंड व्हाट आई सॉ Netherlands was a very what I read, sorry, and what I saw was very meh. Matlab like Xavi Simons very easily nullified. Gakpo भी not special per se. Tijani को मतलब अजय भाई हम Tijani Rangers की इतनी बात करते, right? We know he's a good player, Right. very good player actually. We praise him a lot, but once the support gets nullified and once he's forced in a deeper zone of sorts, उसका गेम देखो आप, उसका हीट मैप जैसे पुल अप किया. थैंक यू. कुछ या भी नहीं लाइक था यू कैन उसका, सी कुछ भी नहीं था. हाँ देखो ना किधर उसको फोर्स किया गया है एग्जैक्टली. अगर आप देखो Right. वो लेफ्ट हाफ स्पेस में एकदम डीप. सो दैट्स नॉट हिज एरिया. यू गेट माय पॉइंट. सो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली ही स्ट्रगल्ड फ्रॉम व्हाट आई रेड एज वेल. सो Yeah. जर्मनी को आपको देना पड़ेगा. मतलब नागेल्समैन जो आप जो अभी बात कर रहे थे, राइट, हाउ Tuchel is a good tactician. Nagelsmann in his own right, I feel, is a very good tactician. So True. kudos to him. From what I watched, what I read, this is I can give you guys. अगर comments में किसी ने ज्यादा देखा है, पूरा मैच देखा है, तो please let us know. But what did Fair. you think, Ajay? No, I think yeah, Netherlands, as you rightly said, meh तो एकदम सही word है. They were very Yeah, meh, and yeah. I don't know. I don't rate a lot of these players. I don't rate their coach. तो कोच it's क्या बोलूं यार, कोच की क्या तो बात ही बोलूं, मत करो. कोच की क्या बात ही मत बोलूं. करो. मतलब Ronald Koeman in 2024. I mean, that just says That's it a all. crime. यार. Ajay bhai, you said this, even if you don't rate the players in general, okay, whatever it is, but it is still not that bad a bunch, and then you Yeah, hire a coach like Koeman to coach these guys. What is what is wrong? Like then that tells you everything that is in general has been wrong with Dutch football for decades now, right? decades, वो तो एक decades. अलग ही tangent हो जाएगा. और Yeah, उन लोग कुछ जीतने ही नहीं वाले हैं. मतलब वो जो yeah. आई थिंक एक जो कमेंट था रैंडम एआई गाय हु सेड कि इंग्लैंड का 66 वर्ल्ड कप में दे आर हंग अप, द डच आर Hmm. स्टिल हंग अप विद देयर Oh my 88 god. यूरो. अभी Yeah, भी वो yeah, लोग 88 यूरो के इतना हंग अप है कि दे फॉरगेट कि दे लॉस्ट द yeah, 1974 फाइनल, दे फॉरगेट yeah. दे लॉस्ट द 2010 फाइनल, Hmm. and unfortunately they've always been that bridesmaid. It is just that Hmm. 1 year, because obviously they had that block of Van Basten ho या Ruud Gullit ho या Rijkaard ho. That's why Yeah, they were crossed the yeah, line. But yeah, otherwise, very, I mean, for a awesome country like Netherlands who have such a strong football culture, yeah. probably produce one of the greatest of all time in Johan Cruyff. They have won very little, Absolutely. man. Won very little. Yeah, Sad and to then say. you mentioned Cruyff. He used to call out the hypocrisy within the Dutch FA back हाँ, those decades ago. How अगर आप उसकी book पढ़ो, the Cruyff turn, what that book was called, if I yeah, think that's what it was called. That's where Dutch football is, Ajay bhai. As a, just to go on, yeah, just yeah. a very brief tangent. कि This is where they are because of what they did years ago. And Koeman can't be your coach in 2024 if you're actually looking to win something. I'm sorry. और ये Fair, bunch of fair. players फिर से वेस्ट हो जाएगा. टिजानी रेंडर्स, क्या क्वालिटी देखो यार आप. मतलब टिजानी रेंडर्स, शावी सिमोन्स, ब्रायन ब्रॉबी भी ठीक टैलेंट है. मिकी वेंडरवेन, स्टेफान डेवराई स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. जोरेल हाटो जो हम बात कर रहे हैं आजकल, ऑब्वियसली लिंक्ड विद यूवे, पुट इन अ स्ट्रॉन्ग Yeah, परफॉर्मेंस. एंड actually he was on the receiving end of a two-footed tackle on the ankle from Waldemar Anton. बच गया भाई. बच गया. आई एम ग्लैड उसको कुछ हुआ नहीं, नहीं तो एक और एंकल ब्रेकर हो जाता. बच गया बंदा. That's all बिल्कुल, I can बिल्कुल, say. बिल्कुल.
Yeah. बिल्कुल बिल्कुल But yeah, आपके I mean, कमेंट आपके sorry, Ajay, I want कमेंट to just get your prediction. I just want to get one prediction. Do you think बोलना Hungary finishes about above Netherlands? I Because think they do. I think they do. I really think yeah, they do. Because yeah, मैं वही अभी the next tab that I was going to open is the other results. After which हम लोग आपके सारे comments लेंगे. So yeah. just quickly Ajay having bhai, a look at हाँ sorry, वो last comment तो रवि का मैं पढ़ूंगा ही नहीं. Like I know he's trolling for sure. Oh, Quincy, that's all I will या say. या वो तो भाई, अब वो क्या तो बात बोले ही यार मत करो. अगर वो But yeah, sorry, go ahead. हाँ let's not get into that. I mean it's again मैं अभी अभी अपना YouTube चैनल खोला हूँ हाँ, बैन क्यों करवाना चाहता है भाई. yeah, Ravi, be kind, bro, be kind. So yeah, Yeah, as you rightly mentioned, Hungary winning by 2 goals to nil, and yeah, Sloboslai getting both the goals in that yeah. particular game. Otherwise, you had Dobbik scoring a penalty for Hmm. Ukraine, if I'm not mistaken, and Yeah, Modric but was what's his injury status? Because मैं पढ़ा उसको injury हुआ ना हाँ कुछ. उसका थोड़ा 50-50 है, but Oh I boy. don't think so. It's serious. Hmm. Hopefully, it's not serious because we face y'all on the weekend. वही कल फ्रतेजी को नॉक हुआ तो मेरा भी मुझे भी गुस्सा आया. मैं सुना, मैं देख नहीं रहा था, बट आई हर्ड कि इसको नॉक हो गया. आई वाज लाइक क्या बकवास यार, मतलब दैट टू टुवर्ड्स द एंड, बट अपेरेंटली इट वाज जस्ट लाइक लाइक just that immediate knock. So hopefully Right. both our players aren't injured, because again we don't condone injuries, obviously, Yeah, never, yeah, never. obviously, Yeah, yeah. And Brennan Johnson is continuing. I might just pick him in FPL. देखते हैं. yeah. यार एशिया में I know. Did you follow this the South Korea Iran game? Yeah, yeah, I did. मैं while work I was watching side by side, and यार crazy game. मतलब साउथ कोरिया का एक अलग इशू चल रहा है, wherein there's a lot of क्या बोलते हैं, uh, nobody is in sync, from the coach to the management to the players. But they called up some of their old veterans, and they really beat an informed Iraq जो मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं in general. So very good game. This was very entertaining actually. ये वीक एशियन फुटबॉल में बहुत अब मतलब सीन्स हुए वेयर इन सम क्रेजी स्टफ हैपेंड, ऑब्वियसली विद द होल Yeah. मोहन बगान थिंग. दैट्स वन थिंग. पर अपेरेंटली एक मैं चीज आपको बोलता हूँ, बहरीन वर्सेस इंडोनेशिया था लास्ट वीक, और हुआ क्या ना, द अरे रेफरी या एडेड या या 90+6, राइट, 6 minutes वर एडेड, और रेफरी मैच लेके गया 99th मिनट तक, एंड दैट्स वेयर बहरीन इक्वलाइज्ड एंड मेड इट 2-2. या सो द Indonesians, they're crazy, so they went या nuts. They went mad. They're apparently going to display a tifo in their home game next time, where they'll mock the referee. Or this is where I draw the line. They found out the referee's number, his address, and they started sending him death threats, and they were even putting hits out on his name. Oh So this damn. is where I draw the line, and so I felt for the guy because uski family danger mein aa jati hai, obviously, and he's safe so Obviously. far. He's been given protection, and Bahrain FA condemned it. But this is just dumb. Like his family is literally still at risk. है. उसका एड्रेस लीक कर दिया जब, मतलब सोचो, Damn. it's just terrible. So this is where it can go, and that's why actually the whole of Asian football community is celebrating Indonesia's lost just now because of what they did to that referee. I mean, they just lost to China as we were speaking. So, and again, Japan drawing to Australia is crazy. Matlab, you don't think that Yeah, this Japan team will be drawing to Australia, yeah, yeah, who is not yeah. that good. Matlab, all players underperformed. I was watching Mitoma, not good. Generally, all the star names very below par. And actually, बहुत मतलब Japan will make it. There is no doubt about that. But there is a good chance that some unexpected countries might actually qualify for the World Cup directly. मतलब there is a good chance that tonight Saudi Arabia might take a very क्या बोलते हैं, मतलब might fall down further for World Cup qualification, and Manchi might actually lose his job tonight. So the news is that if he does not beat Bahrain, he'll lose his job. Roberto Mancini. Right, 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 And right. he's Ajay bhai, remember his salary is very high. He's one of the highest paid Very coaches in high, the world. obviously, Yeah, very obviously, high. obviously. So apparently he's going to lose his job if he can't get a result. ये सब बस मैं देख के बोलता है होप वी वर देयर समवेयर यार, मतलब बुरा लगता है देख के, मतलब दैट्स ऑल आई सच में कैन यार टेल इंडिया यू. जाने दे यार इंडियन फुटबॉल के चक्रव्यूह में अपन फंसेंगे नहीं बट आई थिंक जो जस्ट टू ऐड सम मोर कॉन्टेक्स्ट जो तू बोल रहा था आई फाउंड दिस एब्सोल्युटली मतलब दिस इज ठीक है आई मीन आप थोड़ा वो रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहे हो बट दे वेंट अ बिट ओवरबोर्ड द इंडोनेशियन फैंस दैट Yeah, इज yeah, आई एम टॉकिंग अबाउट it's सो too much. It's दिस इज व्हाट दे sorry, डिड राइट ये yeah, बहरेन में yeah, गूगल yeah, मैप्स में दे yeah. रीनेम्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस एज एएफसी माफिया
या एएफसी माफिया, वो देखो हर जगह एएफसी पे। के अगेंस्ट फिर भी, बट उसका लोकेशन निकाला जब है वो रेफरी का, आई एम नॉट एंड इट्स नॉट इवन फेक। नहीं, ऑफ कोर्स, मैं पूछा, ऑफ कोर्स, आई स्पोक टू 2-3 जर्नलिस्ट हु कवर एशियन फुटबॉल एंड दे वर लाइक नहीं, ये सच्ची में उसका लोकेशन, उसका फोन नंबर भी निकाला वो लोग ने, एंड दैट्स नॉट क्या, राइट। मतलब यस किड्स एट द एंड ऑफ द डे, एज अ फैमिली ब्रो, एंड हिज लाइफ आल्सो, ये क्या होता राइट, है यार, मतलब ये कुछ ज्यादा ही कर दिए लोग। राइट, एंड they were राइट। taking pride in it, they still today are, they are making parody accounts on Twitter on his name या to mock him. ये देख, दे हैक्ड इनटू द bahrain Yes. FA का सारा अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया, दे हैक्ड इनटू इट, सो साइबर अटैक हुआ इनके ऊपर। Yeah, it's just too much. I'm sorry. This is where we draw the line. Like, come on, यार, ये कुछ ज्यादा. It's a game of football, अजय भाई. As much as we love the sport, आप इतने हाँ यार, decade से देख रहे हो, आप तो मेरे पहले से देख रहे हो. It's just a sport at the end of the day. ये सब नहीं ट्रू, होना चाहिए, guys. ये सब नहीं होना ट्रू, चाहिए. I'm ट्रू, sorry. ट्रू, ट्रू। Terrible. अपना देखना कतार के अगेंस्ट क्या हुआ था, तो Yeah, exactly. वी हम नेवर लोग ये सब रिएक्टेड। किए. Yeah, exactly. कतार गुड एग्जांपल. अपना तो ब्लेटेंट रॉबेरी था. 3 मिनट ऐड करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अपना तो बॉल क्रॉस हो चुका था पूरा. हाँ, Exactly. So yeah, it's just sad to see, and yeah, that's all I can say. लेट्स But Asian football, लेट्स सी I'll द just say कि कमेंट्स। अगर आप सिर्फ if you can pull up the qualification table, it's a bit crazy. मतलब you might actually see some unexpected countries at the World Cup, and it kind of does feel good to see that, because you don't see different countries that much and you only see the top brass doing well. So थोड़ा अच्छा लगता है अलग countries को देख के. That's all I will say. Again, I wish always India was there, but that's our sad reality. आपने वियतनाम गेम देखा ना जब? देखा? देखा मैंने देखा, आई सॉ Yeah. दैट, बट वही था कि गुरप्रीत सिंह संधू नहीं होता तो शायद अपन और गोल्स हाँ, कंसीड हार करते जाते. थे, उस टाइम पे हार जाते थे अपन, And बहुत I'll बार be हार very जाते honest with you. I did my research that Vietnam team was strong for the most part, but the guy that scored against us was a second division player in Vietnam. So चलो उधर एक तो मतलब थे। हाँ, एक तो, और गुरप्रीत ने क्या किया गोल पे मुझे पूछो ही मत यार. लाइक व्हाट द हेल वाज दैट यार. अच्छा, एज अ गोलकीपर व्हाट हैपेंड व्हेन यू सॉ दैट, मतलब दैट एरर I व्हेन. I am not amazed by anything when it comes to Indian football यार, मतलब या या. I am not stunned, मेरे को कुछ And सरप्राइज and होता it नहीं, मतलब ये actually, सब Ajay, bhai, नॉर्मल। that game proved height is not everything, because अपने defenders are all muscular, tall, and all those Vietnamese players were राइट, actually shorter, and they were bullying our defense. मतलब राहुल भेके और सुभाशीष बोस जो खेल रहे थे ना, मेरे को देख के इतना गुस्सा आ रहा था भाई. मैं बोला नहीं हटाओ नहीं, इनको मतलब पिच. मत जा इंडियन फुटबॉल पे, वो मेरे को वो रैबिट होल के अंदर घुसना ही नहीं है इतना, क्या मैं बोलूं यार, बट तेरे तेरे प्रीवियस पॉइंट पे आता है, आई वाज हैप्पी एट दैट लीविंग इंडियन फुटबॉल आउट ऑफ पिक्चर, दिस इज योर टेबल, जस्ट अ सेकंड, Yeah. आई विल जस्ट गेट टू दैट अपडेटेड टेबल। Yeah, Ravi, I agree. GSS, I think, has to be benched. So, ये तो हाँ वो second round, if I'm not wrong. This is the second round. We दिस वन इज इट। हाँ, I think yeah, this is where. अब देखो, मतलब देखो, Uzbekistan have been saying this is the next powerhouse in Asia, and I hope they या, get there. And they will. There is a good possibility they do finish about Iran. अभी तो मैच चल रहा है, ईरान का भी देखते हैं. But UAE again, above Qatar has been terrible. If for Asian या, champions, they always disappoint. And obviously the joke is that the refs help them, but they do get very lucky. नॉर्थ कोरिया के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ अजय भाई. अब हमने जो ओडिशा विमेन का देखा, राइट, 17-0 एंड ऑल, राइट, it राइट, still baffles me how North Korea is so dominant in women's football. I just maybe एब्सोल्युटली I मैन, एब्सोल्युटली। वर्ल्ड कप जीत लिया भाई अंडर 20. मुझे समझ में नहीं आता है कैसे, बट maybe we'll get to know that someday, the story. But yeah, other than that, pretty straightforward. This group, third and fourth do not get eliminated. By the way, they do play another round, so या, Qatar can still make it to the World Cup. South Korea is actually playing well. Iraq might qualify for the World Cup finally. आपने उनकी story obviously बोली है 2007 की, and this is quite राइट, a good team. Jordan is also pretty decent, पर इसमें if Oman makes it to the World Cup, I have no comments. They are not that good. कैसे तो पहुंच गए, it will be quite funny. And Kuwait, we could have been the team instead of Kuwait, but या, exactly, it's quite. This group is quite straightforward. I think there is one more group, right? Yeah, there is one more group. नहीं Japan, yeah, Japan ये takes, वाला Japan ग्रुप is सी, on top. Look at the gap. Look at the gap. Australia only has 5 points, and Saudi Arabia. मैं बोल रहा हूँ आपको अजय भाई, like Saudi Arabia is really at a risk. They might even not go through to the World Cup. So ये या, मंचीनी को अगर ये लोग निकालेंगे नहीं तो they are really screwed. And या, China is in the same state as India. I'll be very honest. मतलब आज का win but छोड़ के China beat Indonesia यार, I mean that itself is exactly. a Look, one up वो over अपना us। या वो अपना स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही नीचे गटर में है ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग हाँ, मतलब हरा ही नहीं सकते किसी को. वो अलग
Seriously. But yeah, it's quite interesting, and I just love. Look, I personally am a big fan of international football. I know it's not the most popular, but yeah, I personally love it, and I hope something unexpected happens. I personally don't like Australia, so I hope they get knocked out. I don't like Australia, so yeah, I hope that. But Mancini is the manager of Saudi, Ravi. He is. Yeah, oh, boy, he's one of the highest paid coaches in the world. So yeah. Absolutely, absolutely. Yeah. Oh, So there is and talk of Hervé Renard, by the way, returning. वो आपको याद है, right? The guy who beat Argentina at the World Cup. yeah, So yeah, apparently he yeah, could be the Mancini replacement again. yeah, yeah, yeah. Amazing, amazing. The other thing, that came out of this international break has to be this, and such a weird Yeah, thing that happened, man. I mean, I know what you're uh, talking about. I know how what the you're hell talking did this about. happen? The whole Nigeria story versus is only bizarre, यार अजय भाई. The पूरा story is only bizarre. Yeah, yeah. African अरे football, yeah. आप आर्टिकल आप ट्विटर पे जाओ, क्लिप्स है आपके लिए और फोटोज हाँ, है हाँ। ऑफ प्लेयर्स मैं बस अभी बीइंग वही डेड. वही ट्विटर का मेरा रेडी है, ये देख। हाँ, ये रहा. तो अजय आपको सिचुएशन बताना, यू कैन ले द ग्राउंड एंड देन मे वी कैन डिस्कस, ले द No, बैकग्राउंड so एंड. basically, I know that yeah, they are basically stuck in the airport, and uh, I don't know what was the situation. मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, because see they're saying कि कुछ था ही नहीं वो. There was no grounds to accuse the Libyan security teams, but how can you do that in today's modern day? So I'll This has to be looked upon by some. I mean, FIFA or someone else. It has to yeah. be escalated. Yeah. Yeah. So the thing with Libya as a country in general, मैं पहले बोला चाहता हूँ, it's a bit of a difficult country to just go. It's अगर आप travelers को follow करते हो YouTube पे, Libya Right. is, you can't just go to Libya. You need actual work related reasons to go to Libya. Obviously this is an official reason. Obviously Nigeria थोड़ी party करने गई थी, but my point is it has always had that reputation of, because of certain political tension and all, of not being the most welcoming place. ठीक है, एक वो है Right. before I establish. And I'm not judging Libya or anything. This is from an objective point of view, right? Secondly, क्या हुआ, ये लोग लैंड जब हो रहे थे बेंगाजी एयरपोर्ट पे, नाइजीरिया की टीम about to land or whatever, they were directed to another airport somewhere nearby, and udhar se, not really nearby, udhar se they had to drive, udhar se the drive to the venue was 3 hours for the game. Yeah. तो Yeah. इनको वो एयरपोर्ट पे डाल दिया. एक तो उधर कुछ खाना नहीं था, पीने के लिए नहीं था. दे लॉक्ड देम इन. और जब Right. उन्होंने, नाइजीरिया ने क्या किया, बिकॉज नाइजीरिया को वेलकम और ट्रांसपोर्ट देने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब nobody arranged anything, so they arranged Yeah. their own transport in Libya. कैसे तो करके उन्होंने कर लिया, and even then they were not letting them out of the airport for whatever reason I don't understand. So they were 14 literally hours. yeah, 14 नहीं Ajay, it went 15 plus, it went 15 15 plus. plus. Yeah, and no Wi-Fi, no internet. ये तो बॉनीफेस तो भी चिल लग रहा है. बाकियों का चेहरा देखो आप. देरा वो कौन, which player I forgot, Osimhen's post. Boniface is still looking chill, ये but रहा. yeah, Osimhen's post, if you want to open. This attempt by Libyan FA is no longer just a delay. It is an international tactic to weaken and ruin Yeah. the morale of players. Yeah. And it's beginning So- to look more like a hostage situation. Yeah, it was a hostage situation. I mean, it was really bad. Truce Tekong, उनका कैप्टन, Udinese player, of course. William Truce Tekong, उसने तो बहुत बड़ा पोस्ट लिखा. He तो wrote way more than Osimhen did, and he was right. He was right. मतलब अजय भाई, imagine आप कोई कंट्री जा रहे हो, सडनली बिना एक्सप्लेनेशन से आपके पास कुछ है ही नहीं रिसोर्सेज, आप फंस गए हो 15 घंटे के लिए. Look at this. Look at this. This is Madness. हाँ, yeah, this is madness. And डर लगता है आपको, मतलब Libya, again, as I said, it's a bit of a strange country in that regard, because of the socio-political tension and whatever. And अटक गए थे ये लोग. And the thing is, these tactics do happen. I can understand what Osimhen said, कि these tactics happen a lot in African football. मैं ये specifically नहीं बोल रहा, but ऐसे shady चीजें ना off the pitch बहुत होती है, to try to put the opposition off, ठीक है, in African football. Because in African football, the teams just want to win at the end of the day to qualify for a World Cup, for the Asian Cup. समझ रहे हो, right? So they do anything possible. And this is a limit. This is a limit that was crossed, obviously. So I think this is a well explained video. Whoever made this, Yeah. if I'm not wrong, kudos to this person. So terrible, Ajay, मैं मतलब क्या ही बोलूँ. It's such a terrible situation. But I'm glad they're back home now. And the Nigerian government brought them back home. Actually, उनका मैच आज होने वाला था, अजय भाई. Libya, Nigeria. Right. The Libyan team is apparently going to go to the pitch, but देखते क्या होता है.
But Ajay, how would you? What are your thoughts here? Because this is so bizarre. I mean, Very bizarre, very bizarre. This international break, yeah, I don't know. It has felt longer than other international breaks. I know it's technically not longer, but मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कितने समय से international breaks हो रहा है. This is something hmm, that's unacceptable in 2024 again. So मैं hmm, वही बोलता हूँ कि ये African Federation has to take a serious cognizance कि क्या चालू है. It has to go to हाँ, FIFA and some action has to be taken against Libya. I'm sorry, but it is. I mean, they need to be kind of reprimanded for what they have done. तो yeah. काफी चांसेस है कि होगा एक्शन तो लिया जाएगा उनके अगेंस्ट. Hmm. सैड टू So सी दैट so द प्लेयर्स सफर यार. yeah, they suffered. भाई किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता आप समझो. What if हाँ हाँ. somebody had some issues and there was no medical facility and या Libya it has been arguing कि हमारे साथ नाइजीरिया ने ऐसा थोड़े साल पहले किया था. But that doesn't mean you do it again ना. मतलब ऐसे और वो प्लेयर्स ने थोड़ी किया था. वो नाइजीरिया के एफए ने मिसमैनेजमेंट किया होगा. You file a complaint against them basically. बिल्कुल Why are you बिल्कुल. doing it to the players? ऐसे थोड़ी होता कि तूने किया मैंने किया. This is professional football. But again, this is African football in a nutshell for you because आपने ड्रॉग बाबा का वो वीडियो देखा राइट शॉर्ट ऑन so ब्लैक that मैजिक. basically my point is this is what happens in African football. That's the entertainment value in. I'm not saying this is good by the way, don't get me wrong, but या this is what happens in African football unfortunately. सैड है Shivam is वेरी. here in the chat. Nice to have you, Shivam. But yeah, कैसे हो a एल्टो sad कैसे. situation, but I'm just glad the players are back home. They're fine. So yeah. या इनफैक्ट साउथ अमेरिकन फुटबॉल में कुछ कम नहीं चल रहा है बट वी डोंट हैव द टाइम राइट नाउ टू कवर इट. Yeah, But yeah. South American football, maybe you have a lot of issues happening with Oh Uruguay. boy. I know that they're struggling, and Brazil finally, chalo, they won against Peru, but nevertheless they have a very tough next set of qualifiers in November. Hmm. But South Hmm. American football के बारे में अगर आपको आप लोग को follow करना है, go to Twitter and Shivam, follow Shivam. Shivam. He is your encyclopedia for everything related to Yeah. South All Indian I or will South American football. South Indian कहाँ से निकल गया? The South South Indian. Indian League came out. South the American. biggest the biggest controversy there is Luis Suarez calling out Bielsa, and I do think he made हाँ valid हाँ points. हाँ Luis Suarez, whatever I love, हाँ. as much as I've supported Bielsa, I was shocked to hear that side of Bielsa. मतलब, I was very Yeah. shocked. So very sad to see that he has also gone down a very strange path. But let's take comments, Ajay bhai. मतलब, I know there have been a lot of Let's people. take comments. It's been a while since we took some comments. Hmm. Jatin is here. Hello, कैसे हो यार Nice to भाई? have you, Jatin. Nice Nice to to have have you. you. FIFA पे तो मोहन बगान केस भी जाना चाहिए. What? Yeah, this is the Iran situation, of course. Uh, Yeah, what I find amusing, परम कि एक शब्द नहीं है. मोहन बगान ने एक स्टेटमेंट this डाला is नहीं the है. problem. This is exactly the problem I'm telling you. आप AFC को whatever you feel AFC is wrong, but why is Mohan Bagan not doing anything? बिल्कुल From बिल्कुल. what I'm hearing, Ajay bhai ki उन्होंने they never launched a complaint on time. Also, apparently they were या. delayed in that. और अभी भी follow up नहीं कर रहे. I am willing to support them, but do something. Why do you not want to play कुछ AFC तो करो. two? मतलब it's a कुछ तो prestigious करो. competition. Like वो खेलना. फियागो ने वीडियो डाला मोहन Yeah, बगान के Fiago पहले. ने डाला. Exactly. Fiago is doing more than the official club. Like, what is Mohan Yeah, Bagan doing? There is no correct. news apart from There's no news. Marcus saying कि वो लोग शायद करेंगे. उसके बाद से कुछ न्यूज नहीं है. So I don't know what they're doing. Sorry, कल कल फिर से another qualifiers है. another another Brazil defeat. Wait, but don't they have an easy game if I'm not wrong? मतलब, with all due respect, I think is it Peru or something? पेरू को तो अभी खेला ना. Yeah, it is Peru. It is Peru. मैं वही पेरू को पेरू नहीं यार. हराया तो then they are a lost cause. पेरू के अगेंस्ट है. हाँ, ठीक है Yeah. ठीक. हाँ यार, I don't know. they're not interested in playing. If they're not interested, then I have no words. I'm sorry. This is not how you treat an actual continental competition. भाई club बदल दो यार, किसी और को भेज दो फिर if they are not interested. Yeah, Peru. That's not थोड़ा Peru है ना. थोड़ा पीछे जाता है कमेंट्स में because we missed some. हाँ. Wait, what? मेरे को पता Is पता ही that नहीं like a passive. नहीं I नहीं don't नहीं know. भाई. I don't know. Even I don't know. Sorry भाई, मेरे को सच्ची में पता नहीं what you're talking about. Qatar, how they win Asian Cup back to back and one. And last 8 months I never watched any Nepal match. अरे भाई आपका तो मुझे अलग ही बुरा लगता है भाई नेपाल का. मतलब I know there was a bit of a bright spark बीच में, मतलब पर ठीक है. I know Nepal is behind, but then I hope you guys do well. You have at least a purple patch at some point, because I do feel for Nepal थोड़ा bit like
But yeah, Qatar, I don't think they should have won the Asian Cup. They got a lot of help from the referees this time around. I won't go get into that, but they were very lucky this time around. हम्म, So थोड़ा पीछे का कमेंट पुल करता हूँ जेनेट्रॉन का. But do you बताओ think अजय, बताओ Barca अजय. have a chance against Bayern? I definitely feel they do, Yeah. because they have a better manager than Bayern for starters. Hansi Flick is way better than Vincent Kompany, and I fully expect Barca to win this game for sure. Yeah. या वो मार्जिन पता नहीं, बायन का डिफेंस मार्जिन मेरे को पता नहीं, बहुत देख के हाँ कुछ बायर्न होता का है अंदर. डिफेंस, बायर्न वो का डिफेंस भाई. yeah, ये it's not. ये कंपैरिजन में मैं डिसएग्री करता हूँ शहजाब, बिकॉज देखो यार, आई नो कि इंडिया हैवंट वन क्रिकेट में आईसीसी ट्रॉफीज ऑफ लेट, बट द टाइड इज टर्निंग फॉर श्योर. Yeah. एंड इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड आई फील कि उनका मीडिया भी थोड़ा ओवर हाइप करता है. एंड आई Yeah. स्पीक अबाउट दिस अ लॉट कि द Yeah. गोल्डन जनरेशन दैट पोर्चुगल हैड इन 2004 Hmm. was crazy. You had Yeah. Figo, you had Rui Costa, you had Fernando Exactly. Couto, Exactly. you had Deco, Costinha, Paulo Ferreira. They all had come from winning a Champions League with Yeah. Porto. Amazing generation. Hmm. You had the Spanish generation, which did not win anything before the golden era came in. You had a lot Hmm. of players there as well. Fernando Yeah. Hierro, Ivan Helguera, Casillas, Cañizares, Yeah. Salgado, Raúl, Morientes, David Albelda. But again, there has That been anything. Portugal team was very, matlab, in short, it was a top team. I'll just be बहुत back, बहुत Ajay. top. Just give me a minute. हाँ, बहुत टॉप टीम था यार. इटली का गोल्डन जनरेशन क्या सही था, which eventually won the World Cup. So this is, I as an Indian cricket team fan, मेरे को थोड़ा बुरा लगता है इसमें. I know कि India have not won a lot of tournaments, but the tide is turning. Pep Guardiola should have gone for England. I don't think so. This will happen because Guardiola, in my opinion, still can manage a club, and I think he should manage a club before he goes for the Yeah. national team. Yeah. यार, India World Cup में India is not going to qualify for any World Cup, Ravi, unless we host it. And उसमें भी hosting में भी you have to spend $1 billion, because Yeah. आपको सारे स्टेडियम्स को रिवैम्प करना पड़ेगा. ये कर बहुत मतलब मेहनत का काम है. Hmm. बट वो फिर भी हो सकता है क्योंकि अंबानी इज इंटरेस्टेड इन फुटबॉल. या मेरे पर वही है ना, मुझे लगता है इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी होस्ट करके. बैंड बच जाएगी. Yeah. ब्राजील का They're देखो, not- ब्राजील इज स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम 2014. या ब्राजील का तो बैंड बच गया. ब्राजील was Band बच screwed after that World Cup. And Yeah, I just want to say, एक तो भोसुरे, to your comment, like he's saying he's a Mohan Bagan fan, so he's agreeing with what we said. And Ajay bhai, just before we go, something shocking is happening. This is where, look at this, if you can see. Sorry, this is not visible because शेयर कर, Yeah. डीएम This is- कर प्राइवेट चैट में. if you open FootMob right now, okay, Sudan 2, Ghana 0, and Ghana is sitting like only with 2 points, and they could miss out on Africa Cup of Nations. Ghana, Wow. with players like Iñaki Williams, of course, Mohamed Kudus, Suleimana, and all these guys. Just Salisu, just imagine. Crazy. Damn. Just and we are the only ones who can't do anything. And Sudan again, But- war torn nation. पर हम डूइंग कैल्शियो चर्चा पीआर लाइक प्राइम जूड बेलिंगम एंड रियल मैड्रिड. यार मतलब करना तो पड़े. बट कॉस्टो, यार गो फॉलो कॉस्टो ऑन ट्विटर. अभी आप उसको कमेंट्स में देख रहे हो. ही हेल्प्ड अस सो मच ऑन द टोरिनो वीडियो, so much. He sent me articles that enlightened me on so many things. So thanks to Kostub. उसको ट्विटर पे फॉलो करो यार. He writes so many things, so go follow him there. Yeah. Sorry, my bad. I had to prepone this. थोड़ा मेरे को बाहर जाना है, तो थोड़ा Yeah. प्लान आ गया, तो I had to prepone it, but I didn't want to cancel the stream. So Yeah. we are going. Yeah. Thursday को तो कैल्शियो चर्चा का भी रहेगा. Oh yeah, that is Yes. crazy, by the way. By the way, I speak to a lot of Nigerian friends of mine from the inter community. There's too much corruption, and you see the result of that basically, Shiva. That's all I will say. Yeah. Bobby Charlton entering. I know the reference. Costume, if you're India. still there. Sorry. Yeah, he is. So you were saying something. नहीं, मैं वही बोल रहा था कि यार Fiago is doing more for Mohan Bagan right now and for Indian football than Indian football Yeah. officials themselves. But that's a Yeah. different story. I mean, let's not. That's a different story.
इवन कौस्तुभ का आइडल बॉबी चार्टन नहीं होगा यार, एंड्रिक का आइडल बॉबी चार्टन है. दैट्स फनी यार. दैट्स जस्ट क्वाइट फनी. ये सही है. ये एकदम ये कमेंट को मैं एग्री करता हूँ कि भाई अगर आना है तो इटली आ, प्ले फॉर वन ऑफ योर एक्स क्लब्स हु आर स्टिल इन सेrie A. कोच ब्रेशिया अरे मैं ब्रिंग देम बैक. क्यों रोमा में आना, start a winning dynasty in Roma, the club that brought you to Italy, come back to Roma, and लोग की. finish the unfinished business. पर हम तेरे को याद है कि Guardiola was a major flop when he came to Roma, and Yeah, that he is did, why yeah. वो Brescia चला गया. And do you remember who replaced him, his position? No, I can't यार. It was De एकदम Rossi. Okay, yeah. So, My bad. Yeah, off the top of it. That's a good one. Yeah, correct. My bad. Yeah. बिल्कुल But yeah. बिल्कुल. Uh, अच्छा Don हुआ, Bradley. अच्छा नूरी कॉन्ट्रैक्टर या कोई जो ब्रिटिश इंडियन टीम है, तू कौन सा उसमें नहीं चला गया. Yeah, माय yeah. आइडल इज भुवन फ्रॉम लगान. Yeah. अरे भाई ऐसे तो उस कचरा कोई आइडल बना दो, मतलब वो तो अल्टीमेट रिडेम्पशन आर्क हो जाता. on the Yeah, the spin. fourth day on the fourth day of a test match or the first day of a test match in Pakistan, you can bring a spinner. Kachra Yeah. would do really well. Yeah. Uh, मेरा रेंडर्स वाला कमेंट लेना कौन सा वाला है यार, आई अरे मिस्ड इट अजय. वापस दे. बट मेरे को बिफोर एक जो लास्ट टॉपिक मेरे को जो बात करना था बिफोर वी एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक टेक ऑल द कमेंट्स एंड रैप दिस अप, वाज ऑफ कोर्स Oh yeah. दिस ऑसम थिंग दैट हैपेंड Yeah. फाइनली. ये हम लोग काफी टाइम से चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, एंड यू फाइनली हैड डैनियल माल्डिनी मेकिंग हिज डेब्यू, becoming that third generation of the Maldini family, Yeah. and carrying on the legacy. Or matlab, Yeah. you don't see this in other footballing countries Yeah, at it's the difficult. highest level. I'm as Yeah. a Azzurri fan, I'm really happy. And मैं ये Yeah. start में बोल रहा था परम, amongst all the panelists I rate him really highly. Always liked his talent, and it has taken time. मतलब वो ऐसा नहीं कि he was like a bona fide youth star as such. But I'm Yeah. sure that given the right circumstances, वो थोड़ा और mature होगा. He'll do really well. Yeah. And I was Yeah. funnily enough talking कि जो उसका वीडियो वायरल हुआ था, the seed off वाला tackle when he हाँ. was like 7-8 years old, and we Yeah. all thought that he'll become a defender, but he ended Defender. up becoming an attacking midfielder. Yeah. अब कौस्तुभ का कमेंट में मुझे बहुत हंसी आ रही थी, कचरा इज क्लियर ऑफ उसामा मीर. भाई पर या नहीं, डैनियल माल्डिनी आई थिंक द फर्स्ट स्टेप, वी आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, जैसे हमने वो लेगेसी वाली वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था. Remains to be seen where he ends up, how he ends up. I know links with Inter, also with UA, not just. The comment I've starred and kept for you right here. Yeah, it is with Inter, but also with UA. I know this, and ये दो clubs नहीं. I'm sure there are tons of clubs monitoring. ये general आजकल का trend होता है अजय भाई, right? There is, all clubs have pretty much all players on their radar, realistically speaking, and I do feel he needs to take that thoda mid-level step after Monza if he does well at Monza. Like what I mean to say with, and what I mean by mid is not by in a disrespectful sense. I mean to say कि mid-table team. And I feel if let's say Paolo Vanoli कुछ Torino में करता है in the next 2 years or whatever, I feel a club like that, a club like Parma would be the right step if he wants to stay here. Torino, Bologna, Fiorentina, Parma, ये चार वो इटालियन जब तक है उसको उधर मत भेजो. वो जब तक उसको उधर मत भेजो, उसका करियर उड़ जाएगा बेचारे का. But all jokes aside, I agree with you. I think Torino, look, I know Parma is also not doing well, but again they are known to nurture talent at the end of the day. And Fiorentina, yeah, sure, why not? But it's too chaotic a club, so आप बोल नहीं सकते किधर जा सकता है. And to be honest, you know what, Ajay bhai, I would like to see him carve out his own legacy. मतलब माल्डिनी एसी मिलान है, ये वो है. आई थिंक डैनियल माल्डिनी अगर कुछ अलग ही करियर पाथ बना ले, maybe he starts doing extremely well for a different club. Nothing like it. That's what I feel. But I feel it's too soon for an Inter or UA. If Ratesi's agent cries more, sell him, bring Maldini as a replacement, he might be happier as a backup. I can see him
कॉस्टो भी हम वो लोग वही बोल रहे थे ना, आई डू सी डैनियल माल्डिनी एज लाइक अ वेरी गुडमंसन टाइप प्लेयर ऑलमोस्ट. Yeah. और मैं वो गुडमंसन का इंटरव्यू पे थ्रो बैक दिया कि वेर ही वाज बेगिंग टू, लाइक व्हेन ही वांटेड टू साइन फॉर इंटर, बोल रहा था मैं लेफ्ट सेंटर में भी खेल सकता है, वो मिकिटारियन वाले रोल में. सो आई सी व्हाट योर विजन इज. और अगर हाँ फ्रतेजी, I think he's personally very happy. देखते हैं क्या होता है, पर हाँ बेचा तो then you have to open up to any other possibility. It can be Daniel Maldini, it can be Giovanni Fabian, but yeah, for if everything Maldini to oh, बहुत हंसी आई यार इस पे, बहुत हंसी आएगा. Imagine Daniel Maldini under Conte, यार I can't even think of that. It's so strange. It is so strange. It is so strange. And Inter Milan, YDL हाँ, can do this. वो जाके बोल देगा कि एक yeah, काम कर डैनियली आ जा तू, अच्छा डील दूंगा, मेरा yeah, अच्छा कांटेक्ट है, तू टेंशन मत ले, आ जा, मैं तेरे को आईटी सॉफ्टवेयर वो भी सिखा दूंगा, ऑल्टरनेट करियर बना दूंगा. आई थिंक दैट yeah. विल प्रोबब्ली फील इट. ही विल टेल पाउलो कि देख पाउलो, अगर तेरे बच्चे को मैं कोडिंग भी सिखा दूंगा along with Kode. football. I can imagine the craziest of scenarios here. Daniel Maldini being played as a wing back because Wing yes, back, right Mercury wing is. back. Costa, what do you say? Left wing back, right wing back, राइट Daniel विंग बैक Maldini. जो पोलिटानो को खिलाता था इंटर में, वही वैसे खिलाएगा उसको, और बाद में आके बोलेगा कि आई डोंट हैव एनी प्लेयर्स हु लिव विद मी. Yeah, yeah. We have some new people in the chat. Inter Milan करके. Nice to have you. मैं पहली बार देख रहा हूँ, so I just want to tell him. आप अजय भाई के channel को if you're sorry, I'll just say it in English in case he's a foreigner. अगर please do subscribe to Ajay bhai's channel. Please subscribe to Calcio Charcha. Ajay bhai will put it in the channel. We'll show it in a while. So please do subscribe. Maldini, if you have guts, carry Genoa. You are going to have Balotelli to carry Genoa, bro. And वो हो रहा Ajay, है कि नहीं फाइनली बालोटेली का, क्या हो रहा I है think उसका? they did sign Gaston Pereiro, average player है बहुत. And this is where हाँ, I'm worried ना अजय भाई की Twitter पे I was seeing some Genoa accounts say कि this is not a project. These are just filling holes and not even properly. I'll be very honest with you. Balotelli and Gaston Pereiro is not the answer. ये लोग मुझे गंदी feeling आ रही है. I feel very bad for Genoa. और Aditya is आई नो. trolling. Reports are coming from Italy that Simone Inzaghi is learning English so that he can reject Man United. ये बहुत कॉमन मीम है, बट कब हंसी तो आती है पढ़ने में. आई डू वो अग्री. तो है यार. या पेप टू जेनोआ. आई वुड लव टू सी. यार who says no, Pep says no. I would love to see that, but I think there are few more comments maybe जो ऊपर थे. Yeah, there was one comment. रूमर ट्रू है या नहीं, टॉड बॉयली बाइंग जेनो, मतलब आप ट्रोलिंग, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, सो आई गेस यू आर ट्रोलिंग और समथिंग, बट या नो ब्रदर, आई एम हिंदुस्तानी एज वेल. आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेस वेयर वी कैन डू चर्चा. भाई आप कैल्चियो चर्चा पे हो, आई गेस यू आर न्यू, दैट्स व्हाई मैं वही बोला. अच्छा, सब्सक्राइब टू द मेन इटालियन फुटबॉल चैनल. अजय भाई, इफ यू कैन जस्ट स्क्रीन शेयर, आई थिंक माइट एज हाँ वेल बस शो इट कर. टू. Yeah. I'm glad he's new. 15 people, so right time to show it. Yeah, just hold on, guys. And he might as well show the Torino video as well at the same time, guys. Again, for those who haven't subscribed, ये Calcio Charcha, this is our main page, मतलब home page for Italian football, and this is where we cover Italian football. आप तो जानते हो, for the people like Inter Milan, as per his username, new people, please subscribe, spread the word. And again, if you can see in the video section, अजय भाई अगर थोड़ा zoom in कर सकते हो आप, हमने Il Grande Torino पे एक वीडियो बनाया, and people loved it. For those who watched it, I know the algorithm doesn't share it with everyone, so अगर आपने ये मिस किया है, प्लीज जाके देखो. हमने टोरिनो के टीम को एक ट्रिब्यूट दिया है, and I hope we have done it justice. The response was good. So अगर आपने अब तक नहीं देखा है, मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाले वीडियो पे, प्लीज गो चेक इट आउट. इट इज आवर ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इटालियन टीम्स दैट unfortunately went through a tragedy and was never the same again. One of the greatest teams. Ajay bhai, if you want to say something before we move on. I think this video when we recorded, you, me, and Costa, Yeah, it sort of made us emotional. There were goosebumps yeah, at different times of the recordings, and one of the most emotional videos that I've been part of. yeah, So yeah. I think when you become an Italian football fan, तो Hmm. आप नेचुरली ये सुपरगा ट्रेजेडी एंड इल ग्रांडे टोरिनो के बारे में पढ़ते हो, बिकॉज इट्स देयर. बट दैट्स Hmm. नॉट नेसेसरीली द केस कि अभी काफी सारे जो आप लिसनर्स हो, यू मस्ट बी लाइक 15, 16, 17, 18, 19, 20, दैट एज ब्रैकेट. तो मे बी यू नॉट हर्ड ऑफ इट बिकॉज यू सपोर्ट द Yeah, डिफरेंट क्लब्स इन यूरोपियन फुटबॉल, इंग्लैंड में हो, स्पेन में हो, जहाँ पे भी हो.
तो हमारा कोशिश यही था कि आपको ये स्टोरी लेके आए, so that you can also know about this wonderful team that existed, like, you know, in the 40s, 50s, and a very tragic event that shook the world of football so Yeah, much. So yeah. I just hope that you go and watch it. या आप भी देख लो एंड लुक वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर द व्यूज लाइक जैसे मैंने वीडियो में बोला था कौस्तुभ हैड लाइक अ रेयर पीस विद हिम वेयर ही हैड द टिकट ऑफ द फ्लाइट बट वी डोंट शो इट वी वोंट शो इट इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू बट थिंग्स लाइक दैट वी आर नॉट डूइंग दिस वीडियो फॉर द व्यूज वी आर डूइंग इट because we want people to know ki bhai this could have probably been the greatest Italian team if the Torino legacy continued Ajay bhai Yeah, this had very well the works to be the greatest Italian team or the top two at least in the future if everything was fine. So ये टोरिनो की जो लेगेसी जो भूली जाती है जो बात नहीं किया जाता है this was our attempt and अगर yeah, आपने मिस किया है वीडियो for because of algorithm reasons or whatever if you've not watched it please do so and share it with your sports fans. This is even if it's a football related thing ये ऐसी स्टोरी कि आप sports fans को दिखा सकते हो कि exactly क्या हुआ था. So please do बिल्कुल, guys share it. It's not about the views, it's about people letting people know what this story is. So yeah, that's all I would बिल्कुल, say. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Guys, last bit of comments लाते रहो. Yeah, We'll sure, wrap sure, up in the sure, next 10 minutes odd. sure. But just from the start, Pep to Como, Look, billionaire I owner. feel this can strangely ये थोड़ा realistic in a way sound करता है in a way if मतलब you get what I mean if Pep decides चलो मेरा हो गया उधर थोड़ा दूसरा अलग type job चाहिए पैसे wise it does but then like again Como is not going to spend utna bhi big now that I think of it because we know this club has gone through 3 bankruptcies in its Yeah, history. yeah. So क्या लगता है जब पर हुआ तो कैसा लगेगा आपको इमेजिन सेस्क ओनर थियरी ऑनरी पार्ट ओनर एंड देन पेप बीइंग द कोच एंड व्हाट नॉट अवेंजर्स That असेंबल that's that's not going to happen. That's definitely not going या to आई नो happen. I वो होने के पहले मैं let me show you the destiny जो मेरे को लगता है कि that this has to happen. श्योर श्योर Look at this. कमेंट्स Look लेंगे at भाई this. लोग आपके जस्ट होल्ड Look ऑन at this. हाँ That's a young Pep ओह Guardiola with hair. yeah. Vincenzo Ajay Montella, bhai, so Gabriel basically Ajay Pachuco. bhai is manifesting Pep to Roma, इसलिए उनको नहीं चाहिए कोमो वाला move. You never know, यार. You never know what football holds. देखते हैं at the end of the day. But yeah, I've seen. What are your thoughts, Ajay bhai? I'll give my thoughts on his move to Inter because I'll give it. But what do you think? What do you think of him I as a think player? I think he could use a change of scene because last year he was good for Leverkusen. इस साल उतना खास नहीं है. So I think कि वो अगर वो आएगा, he would be more suited to a back three in my Hmm. opinion. Hansi Flick deploys a back four. इंटर के लिए तो है ही. I don't think so he makes it to your starting lineup, but as a Yeah. backup option at No, best. look, the thing is with Jonathan Tah, I again watched a lot of him over the years, and last season was his proper consistent good season, and that's my problem with Jonathan Tah. He used to make too many errors for the national team, and even before Xabi Alonso came in, way too error prone a player. And अगर आप ये season Leverkusen के games देखोगे अजय भाई, उसमें already वो errors वापस दिख रहे हैं as a player. Yeah, And then yeah, when you yeah, look at his potential salary कि वो शायद 5 million से ज्यादा मांगेगा शायद, ठीक है, and then all of that and Bayern also didn't want to spend money this summer to get him if you remember for yeah, good reason. And I do agree with you. He might benefit a bit from a back three and how we play well as a defensive unit. But yeah, I've never been the biggest Jonathan Tah fan. अगर वो salary थोड़ा cut करे, I can see him being like an upgrade on Acerbi because Acerbi regress हो जाएगा. Now, yeah, to your point, he is not going to be a backup. But देखो Inter में really everybody accepts that role of rotation. ठीक है, so I wouldn't be against it, but I won't lose sleep if we don't sign him either. I'm not a big fan. Again, I think he's a decent player, but that's about it. क्योंकि वो करता है errors. अगर आप देखोगे, especially for the German team, he makes a lot yeah. of errors. करता हूँ, error That करता हूँ. gets yeah. तो बहुत overlook होता है वो. So I would not lose sleep over it if we don't sign him. मुझे चलेगा नहीं क्या तो. Fair. क्रिश को मतलब I give him hats off है सच्ची में मतलब I love the optimism. I hope you followed that La Lanterna podcast, Krish. मतलब for a daily more Genoa coverage. हम लोग तो करेंगे ही, but I hope you have followed them. This is Ajay Bhai had brought this up on the video. Yeah, yeah. Maldini Yeah, is Christian Maldini. yeah. यार, sad, but I mean it is what it is. यार, फुटबॉल में तो unfortunately. है, चलो आप वैसा बोल फुटबॉल सकते हो, में तो होता फुटबॉल ही में है तो यार. है. फुटबॉल में Yeah, होता ही है. एक मिनट yeah. मेरे को कॉल आ रहा है.
I'll just take the comments. Best video at Torino wala. Thank you guys for covering this. Yeah, I'm glad to know that you liked it, Aditya. That's all I can say. Ki, as I said, the motive is ऐसा content लाना, and it's we wanted to pay our respect to Torino, and हम लोग वही बोल रहे थे कि as a group, on the video we said this, as a group the hope is that maybe we can go to Turin and pay our respects there personally at some point in the future, because when we were covering we literally got goosebumps, man, like going through everything during the Yeah. video when I was doing research. So yeah, yeah, thanks for Thanks so whoever much, man. liked them. Thanks. Yeah. Thanks so Do much. you think the way Milan is playing will finish in top 24 for the UCL has to be? Uh, हाँ, क्या लग रहा है आपको? टॉप आ तो जाना चाहिए. I feel Milan will be fine. क्या लगता है आपको? Are you skeptical? I'm skeptical. Wow, wow, interesting. Skeptical. I get where you're coming from, though. I get where you're coming from. Uh, Fonseca in Europe, barring that game against Ajax, जहाँ hmm, पे Ajax was coached by Ten Hag, he was pretty clueless against like that Man United hmm, team shouldn't have dominated. Going to yeah. Old Trafford and थोड़ा bad luck भी था कि injuries हुआ रोमा को, and Hmm. you lost we lost Paul Lopez very early, and then Mirante came in, but 2-1 half leading at halftime and losing 6-2. My God, Hmm. Fonseca in Yeah, Europe terrible. डर लगता Like, है यार. आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट जतिन. मुझे आपका पॉइंट समझता है कि आप वरिड हो, बिकॉज खेल इतना, मतलब आप रिसेंटली जस्ट फियोरेंटीना से हारे, विच इज वन ऑफ द लीग के, एंड देयर आर लॉट ऑफ एमेच्योर एरर्स व्हेन मिलान मेक दोस एरर्स. लाइक श्योर दे वन द डार्बी अगेंस्ट अस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल सी दैट थोड़ा amateurish, that amateurish attitude of sorts in certain players. So yeah, I can बिल्कुल. understand why you're worried. Drogba जैसा club history video करेंगे आदित्य, करेंगे. Look, you saw the Torino video, we brought it to you. Saw the Sven-Göran Eriksson video. When we get time, we will make it all happen. So don't worry. It's all about timing here. Of course, we have other things to do as well. Thanks, Shivam. I'm glad you liked it. All I will say is, भाई आपका तो इतना अच्छा connection भी है. Please spread it with your sports fans. Sorry, this thing, fans. Thanks for the amazing video, says GGMU. अरे आप भी thank you यार. आप भी स्प्रेड कर लो. आप तो मैन यूनाइटेड का कम्युनिटी को भी बता दो यार. मतलब आप तो मैन यूनाइटेड फैन हो. I was a Liverpool fan before, but now followed Italian football because I used to hear that Serie A clubs play boring football. Everyone, but I'm falling into Inzaghi ball and Inter Milan This is for so that. good. Fair enough. Good to इसका see. अरे ऐसे स्क्रीनशॉट ले परम, ये स्क्रीनशॉट ले ले लिया ले लिया और ले और लिया. और मानस और निधि को शेयर कर. श्योर. मानस और निधि भाई को भी नहीं. इंटर मिलान कैसा है ना, मैं आपको बोलता हूँ, देयर लॉट ऑफ लिवरपूल प्लस some Serie A club fan. अभी वो क्रिश आप अगर चैट में देखा, he's a Liverpool fan who's chosen to support Genoa. I know some Liverpool plus like sort of Milan second club, Inter second club, ऐसे है बहुत. And it's fine, second club भी है, मतलब this is what we अंकित want. भी We है want ना, to अंकित सपोर्ट्स Ankit, चेल्सी एंड ही फॉलोज मिलान आल्सो, सो yeah, Chelsea plus Milan. So hey, I'm just glad people are following the league. That's all I can say. Everyone या covers Munich disaster, but they comparison की बात नहीं आती थी. Look, both are tragic events. या We just wanted those Torino legends to be recognized, and what just suddenly took away from the world of football. जैसे अजय भाई बोले ना वीडियो में, he said it so well. It's about human life as well, and या those people were loved by the people of Turin, not just for the football but for who they were. So yeah, that's all I will say. But why not Milan? I feel Pep comes here, I would love it, and his job will be to restore the legacy of. I mean, कौन नहीं बोल रहा है? Of course, you can have him. Like, अगर मैं तो आना अपना चाहेगा तो बायस मैं. से बोल रहा हूँ बिकॉज़ पेप हाँ, bias प्लेड of फॉर course. रोमा. Exactly. Look, at the end आई of the day, yeah, exactly. Ajay Bhai ko to he played for Roma, and he would love to have Pep. And he could take Roma to new heights, right? Like both या Milan clubs are to already very successful in a way. या So या I don't want to lose Simone Inzaghi. So मतलब मुझे तो नहीं Pep की जरूरत है, but that's a different story. Ravi Joshi says you heard about Rangers' dad comments about him joining Barca, such a mature decision. हाँ पढ़ा मैंने. आपने पढ़ा वो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा. मैंने ऊपर से पढ़ा था. हाँ Maybe I'll try to find something and show it. But yeah, I heard. I think Ravi अच्छा choice था. Actually, so just one interesting story, Ajay bhai. His brother Eliano Reinders just switched over to playing for Indonesian national team. Just ओह literally, वाओ literally वाओ this international break, because वो वाओ Dutch Indonesian connection है. Right? Half their team is ऑफ Dutch कोर्स ऑफ origin. कोर्स. So yeah. अरे यार हमसे Gabriel अपार्ट is. अपार्ट अपार्ट फ्रॉम एमिल ओडेरो, वो इटालियन है. Yeah. He's yeah, exactly. Good one, good one. Como Indian Indonesian owners as well. So हाँ, yeah. वो अरे इंडोनेशियन यार है. हमसे Gabriel Jesus ले लो. I think he might work in Serie A and give us Richie. भाई हाँ, मतलब क्या तो. गैब्रियल जीसस टोरिनो के लिए अच्छा करेगा, बट आई डोंट थिंक सो ही कैन Yeah. एक्चुअली. और कहाँ पे, एक तो देख, एक तो सेरिया क्लब्स कांट अफोर्ड हिज सैलरी.
neither can Serie A clubs afford the transfer wage. So Yeah, it's गरीब not है a भाई, realistic transfer. हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है। आपको मतलब हाँ, हमें कैसे, मुझे लगता है ना जब आई थिंक सेरिया क्लब शुड स्टार्ट गिविंग स्टॉक्स ऑफ पास्ता इन एक्सचेंज, कुछ तो yeah. मतलब वाइन पास्ता प्लस पैसा, ऐसा कुछ कर दो भाई, मतलब पैसा ऐसा तो है नहीं अपने। इज दैट एटलांटा डीएम एडरसन गुड, ही स्टॉप, उसको मैं डीएम नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा बॉक्स टू या बॉक्स है, बट नंबर ही इज 8 है वो। अमेजिंग। या नंबर 8 है। एंड अजय भाई, जस्ट 2 cents ऑफ योर्स, देयर इज अ फैंट, वो भी चेनोआ को जब थ्रैश किया, हाउ वेल डिड ही प्ले मैन, ओह, क्या खेला यार वो, क्या ही इज अ खेला। टॉप प्लेयर, मतलब he's a ही इज जस्ट रियली रियली गुड यार। Yeah, yeah, yeah. I agree. One version of player, not an attacker, I loved it was Christian Romero at Atalanta. हाँ, अच्छा था, बहुत अच्छा था. He By the was way, very good. Param, I have a future prediction that Romero is going to join Roma in the future. Wow. चलो आज आपने देख लिया एक और प्रिडिक्शन है अजय भाई का, एंड इधर दिस प्रिडिक्शन, इधर अजय भाई के प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे जाते हैं या फिर उल्टा हो जाता है, मतलब एकदम he might end up at opposite है। Lazio if they find the money. Yeah, even Shivam, even I love Romero. I Yeah, was quite happy that he left Serie A and Juve and ended up at Spurs because obviously, I don't want him at one of our rivals. yeah, But I have a soft corner for him. I love the aggression that he brings, yeah, and I feel कि एक Roma move तो बनता है yeah, यार, and maybe like a similar Federico Fazio move. Like yeah, he was a yeah. very good defender. Spurs में थोड़ा he had his stock down, couldn't really Hmm. adjust to English football, and Hmm. eventually came back to Roma and did quite well, fairly well at Roma for in Hmm. European club competition also. Yeah, So yeah, I feel yeah. कि ये थोड़ा Romero एक I want him at Roma. It's a bias again, but Fair enough. by Inter Milan with the Diego Milito profile picture, I want to do literally streams every day, but वो मुश्किल होता है। permit होता नहीं है. कैसा But होता है देखो, इंटर मिलान, we try to give out videos as much, put out videos as much as possible. All of us have like regular jobs and whatnot, and luckily what I would say is I'm glad we have 7 people running the show, because yeah, अगर एक भी होता तो मुझे लगता हो बहुत मुश्किल हो, आपको जो फ्रीक्वेंसी में भी मिल रहा है वो भी नहीं होता। मतलब आई नो यू आर न्यू टू द चैनल, बट द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच वी पुट आउट वीडियोस मैन, इट्स पॉसिबल बिकॉज वी हैव 7 people इज ऑल आई कैन से, मतलब रियली कैसा हो जाता है, but एटलीस्ट 2-3 people। हाँ, but I hope कि ये एक दिन manifest हो जाए yeah, यार. even I hope this मजा becomes आता है मेरा, possible. मजा आता है Yeah, करने मजा में. तो बहुत Love आता love है, to do मजा it. तो बहुत आता है। I really wish, because Inter Milan, I know there is so much to talk, हम लोग बार बार यही बोलते हैं इटालियन फुटबॉल पे, I really wish it's possible in the future. ये मस्त कमेंट है नेक्स्ट वाला, सॉरी। है मतलब मिलान फैंस छोड़ देंगे मिलान को सपोर्ट करना। नहीं है, मैं I would want to say something just to be a devil's advocate. I think Allegri को जो हेट मिलता है, हाँ वो Yeah, करता है it थोड़ा is. हरकत Yeah, थोड़ा, yeah, of बट course. इट्स अ बिट फार फेच्ड. ही इज Yeah, नॉट अ yeah. बैड टैक्टिशियन, स्टिल वो वन दैट Italian उसके Cup for प्लेयर, Juve against Atalanta. yeah, So exactly, उसका his image, the thing is because of what he says at times and off the pitch, उसके हाँ, उसकी antics से, उसका हरकतें जो जो हरकतें, या हरकत है, exactly, but he's not as bad as Gasperini at the end of the day. मैं confused हूँ चेल्सी को अलावा। एनी Look, एनी क्लब अपार्ट फ्रॉम Lazio. I will look after what I keep saying this, मैं टोरिनो बोलूंगा। I know it's a bit difficult, अगर आप सक्सेस ढूंढ रहे हो तो टोरिनो is not the right answer obviously, given that उनका ओनर भी खराब है बहुत। I was going to curse but I held it back. बट अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए तो ऑब्वियसली बिग थ्री। अगर आप ठीक हो कि एकदम इंस्टेंट सक्सेस नहीं चाहिए, बट आपको मतलब यू वांट अ स्ट्रॉन्ग क्लब, आई विल से एनीवन ऑफ एटालांटा, रोमा, लाजियो, ये वो। नो आपको नो अगर नो नो पागल Lazio, नो नापोली. नापोली, ये नहीं नहीं, नापोली तो नो नहीं। चांस, नो और चांस. कॉन्टे कनेक्शन, बट अगर आपको मतलब इफ यू वांट टू रिप योर हेयर आउट वाचिंग एवरी गेम, देन फ्योरेंटीना इज द आंसर। मतलब पागल हो जाओगे आप उस क्लब का मैच देख के। और अगर आपको रेलिगेशन क्लब वो सब चलता है तो मतलब देयर इज वेनेजिया, आई वुड से अवॉइड हेल्लास वेरोना अगेन, आई डोंट लाइक देम, बट Torino I would recommend, because we saw the video what they were. They are not the same, but with their new coach there is optimism. It's just that their owner is an ass, unfortunately. So मैं टोरिनो बोलूंगा। बड़े क्लब्स में तो ऑब्वियसली अजय भाई विल से रोमा, आई विल से इंटर। सो आप पे एट द एंड ऑफ द डे। या अलेग्री का क्या सीन Allegri है? अनएम्प्लॉयड है, चिल, बहुत खुश है, एकदम चिल कर रहा है. वो या आएगा, बट ही इज आएगा, इनएविटेबल. या ही इज गोइंग टू कम Inevitable. बैक विद अ बैंग। आई एम टेलिंग यू। Yeah. He's inevitable. या How are you, तक्षिल, Takshil? Hope या you're नाइस doing टू well, हैव man. यू।
Nice. I hope he's right. Yeah, of course. मुझे नहीं कुछ और चाहिए भाई, मैं इंजागी से ही खुश हूँ. So at a professional club like Milan can't have these kind of problems. हम लोग डिस्कस किया भोसले तेरा तो बर्थडे है, प्रीवियस तू पेनल्टी लेगा, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पेनल्टी दूंगा. इमेजिन लाइक मैं तो इंटर फैन हूँ, मेरे लिए तो कॉमिकल हो ही जाता है जतिन, बट हाँ हाँ. इवन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डाइसेक्ट कर रहे थे यार जतिन, एंड वी वर शॉक्ड व्हाट वी सॉ. ये तो कोई क्लब में नहीं होता लिटरली इन द सीरीज. ऑल दिस I नॉनसेंस know, डजंट हैपन. I know, So I it know, was. I know. I hope I hope Fonseca sorts it out finally. टुकेल But टू इंग्लैंड का क्या सीन है? just to add a bit fuel to the fire, देखो याद है फोंसेका का gap in the Copa Italia, 6 substitutions, and that Yeah. photo with Pellegrini, Yes. Yeah. holding this number up. Yeah. I know. So So Fonseca it's के not the नसीब में first लिखा है time. admin. Fonseca के नसीब में लिखा है admin और weird errors, I guess. So maybe if some more errors are bound to come, I guess. Yeah. टुकेल टू इंग्लैंड का क्या सीन है? आई थिंक हो जाएगा ऐसा लग रहा है ना. Done. It's टॉक्स चल mostly रहे done. It's mostly हैं. done. Yeah. This is so Wow. good to hear, yeah, Krish. Wow. I'm glad to see that. So, Chris Narula, मैं तेरे को बोल रहा हूँ वो ला लैंटर्न ना पॉडकास्ट फॉलो करो. There's one more website I will tell you. इटालियन में मिलेगा, इंग्लिश मतलब you can translate it to English. Pianeta Genoa, Pianeta Genoa.com. Pianeta means planet in Italian. बस फॉलो कर ले ये दो वेबसाइट. मतलब सर्च इट ऑनलाइन. ट्विटर पे शायद वेब पेज ना हैंडल ना मिले है, पर यू माइट स्ट्रगल टू फाइंड इट. यू कैन डीएम मी, आई विल सेंड यू द लिंक. बढ़िया यार. एक्चुअली आई एम नॉट अब क्या बोलूं, बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा मेस है तो दैट्स व्हाई आई डिडंट, एंड थोड़ा लाइटिंग इज नॉट ग्रेट. आई जस्ट केम इम्प्रॉम्प्टू यार ऑन द स्ट्रीम, सो No worries, apologies no for worries, that. no worries, no Apologies. worries. Italy has the best Argentine. Yeah, he look. I mean, I hope Sule मतलब Sule I'm waiting to hit form. That's all I will say. Sule के लिए रुका हूँ मैं. आपका क्या लगता है जब? Has to. But थोड़ा आएगा, he will ball. Have Yeah, faith. yeah. ये तेरे लिए है भाई परम. टफ है मतलब अपने ओपोनेंट्स इजी नहीं है, राइट? सो आई नो पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस टू इंटर मिलन, पर टफ है. फिक्चर्स आर नॉट इजी. अभी इंजरीज पे भी डिपेंड करता है अगर कुछ हो गया तो. मैं अभी जस्ट न्यूज आया कि बरेला एंड ब्यूकैनन आर रिटर्निंग स्लोली, तो शायद रोमा के लिए वो लोग स्टार्टिंग के लिए नहीं, बट एटलीस्ट ऑन द बेंच. Bench पे सो रहेंगे. देखते हैं, फिटनेस पे डिपेंड करता है सब. या आई एग्री जतिन, मतलब आई नो बट फिक्चर्स इजी नहीं है, राइट? मतलब यूवे विल, अजय भाई यू विल अग्री, राइट? विल लुक टू फिनिश इन टॉप 8. मतलब Yeah, their fixtures they are plant their relative. man. Yeah, Yeah, exactly. So for UVA sure. should, I think, target. Saurabh, nice to have you. Inter Milan, हाँ, respect between. I like to see this. मतलब झगड़ा वगड़ा तो चलते रहता है, but rare moment of respect also. Uh, guys, I have a question. Came back. Sorry, ये must question लग रहा है मुझे. I have a question. Crotone came back in 21. What happened bad with them? इतना कि they are now in third tier. देख क्या शिवम, what I can tell you ऊपर से एकदम very quickly is, जब वो लोग गिरे आफ्टर देयर मिराक्युलस, वो निकोला ने, आपको याद है जब मैं Nicola. बचाया था एंड ऑल. हाँ, वो तो Yeah, किंग है ऑब्वियसली, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली क्रोतोने वाज नॉट अ वेल रन क्लब इन जनरल. बहुत yeah, खराब बिजनेस डिसीजंस. ये आई नो इट साउंड्स वेरी जेनेरिक, बट लिटरली वही केस है कि क्लब्स लाइक क्रोतोने, बेनेवेंतो, आपको याद है बेनेवेंतो ने अगेंस्ट बेनेवेंटे को के कीपर ने मिलान के अगेंस्ट गोल मारा था उस टाइम पे, yeah. एंड नाउ दे आर इन द सीरी सी एज वेल. मतलब सो it's there. क्या हो जाता है ना, these clubs have a lot of stubborn ownership. Maybe I'll cover this topic in more depth later in a short or something, but yeah, they very poor management, and you saw a lot of Serie C clubs that are better managed come up instead. वही case है basically. So yeah, that's all I can tell you. Very poorly managed. करेंगे एल करेंगे क्लासिको मतलब आई नो एल जब आएगा क्लासिको तभी क्या. बात करें. हाँ, क्या आपको प्रिडिक्शन लेना है तो क्या लगता है आपको, मतलब अजय भाई? बिकॉज आई फील ड्रॉ, मुझे ड्रॉ लग रहा है. बारसा विन. बारसा विन. वाओ, interesting. Welcome to Genoa. Wow, that's nice to see. And Krish is making a Genoa fan club in India. I would love to see this. Love it. We Oh, are here Barca for fan that. हो आप? Costume would be the most happiest because Yeah. वो costume का जो stock memes है ना, मेरे को I want to see that. I'm here Yeah. for it. Yeah. These are the moments that we prayed Yeah. for. Yeah, for a journalist, he has like a whole meme का folder जो मुझे बहुत funny लगता है. But nice to see. बीच टीवी, आप बारसा फैन हो, I hope आप सेरिया भी ज्यादा और देखोगे. अजय भाई, आपका पेलेग्रीनी गोल प्रेडिक्शन उल्टा. वही बोला ना, अजय भाई के प्रेडिक्शंस बहुत खतरनाक है. इस पर या उस पर वही. इस बार यार उस बार. या एसी मिलान और यूए करंट किट विदाउट लोगो. लोगो मतलब मतलब वो रहेगा, sponsor मतलब
हाँ स्पॉन्सर, हाँ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हाँ हाँ। भाई, लोगों के बिना एनी गुड प्लेस अपने बताया था। देख मैं जहाँ से बोला वो तुझे बोल सकता हूँ, बट आई डोंट नो स्पॉन्सर के बिना नहीं मिलेगा, वो बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल चीज है। डिफिकल्ट। स्पॉन्सर के बिना तो बहुत। आप प्यूमा का है ना, अजियो और मिंत्रा वगैरह सब में प्यूमा एसी हाँ मिलन उस टाइप पे, कर, उसमें उस मिल पे जाएगा। या यूए का आदिदास के इसमें मिल जाता है, बट बहुत महंगा है ये सब, तो आई डोंट नो। या look, if you're fine with the sponsor, just DM me. I can recommend a good site to you. That's all I will say. As an ex Liverpool fan and new Inter Milan fan to avoid Real Madrid in semi-final Man City, बाप रे। एक चीज बोलूंगा इंटर मिलान, अगर तू लिवरपूल को पूरा छोड़ दिया तो ऐसा फ्यूचर में इंटर को मत छोड़ देना प्लीज। I'm sure you're still a Liverpool fan. I'm sure there's some of banter over there. Yeah, we will be facing each other आर्सेनल, this month. Yeah, this month, right? हाँ दिस Is it मंथ। this month? Yeah, this month, correct. So Daksh Bhai did give us. I did pop in on his stream today for a bit just to say a hi and just talk a bit about Calafiori in the comments. So he did say we will be collabing. So hopefully we look forward to it as well. अजय भाई सी यू ऑन 21st। हाँ हम लोग कुछ करेंगे यार प्रीव्यू करने का, मी एंड अजय भाई, तो डोंट मैं लिव दैट फॉर। मतलब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अपना फोन डीएनडी मोड में डाल के मैच देखने नहीं नहीं वाला हूँ, नहीं, बिकॉज आई ऐसा नहीं फियर इट्स चलता गोइंग टू बी अ है। रोमा लॉस। लेट्स डू वॉच अलोंग ओनली यार। हाँ बट भाई। जस्ट वेरी क्विक स्टोरी ना, हमने मुंबई में एक इटालियन शेफ को ढूंढा है जो इंटर फैन है, तो उसके साथ हम लोग कुछ करने का ट्राई कर रहे हाँ, हैं, शायद वो देखते अगर रिस्पॉन्ड करे। देखते हैं, इफ ही रिस्पॉन्ड्स देन व्हाई नॉट। देखते। इफ कौस्तुभ भाई स्टिल देयर इन द चैट, सर एलेक्स के एम्बेसडर भाई। कौस्तुभ का रिप्लाई वही था ना कि पेंशन स्कीम हट गई। हट गई पेंशन स्कीम यार। जाने दे यार, मैन यूनाइटेड का आई इट्स अ होल मेस इनसाइड यार। आई दैट्स नॉट अ क्लब, वो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही बहुत है। बहुत एकदम एकदम बेकार है। द इट्स नॉट अ फैंस मस्ट फुटबॉल बी क्लब। फीलिंग, या फैंस मस्ट बी फीलिंग सो चीटेड यार, मतलब। yeah, it's not a football club. I'm sorry, it's not run like one. Can you tell some facts about Verona club? क्या कौन? Hellas Verona दो है। दो दो है, हेलास है, किएवो है। Kievo is back. वो लोग बैंकरप्ट हो गए थे, पर या अभी वो लोग वापस आ गए हैं। दे उनका जो क्लब लेजेंड है ही बॉट देम, सो दैट इज वन फैक्ट फॉर यू। पेलेसियन। सर्जियो पेलिसियर करके, यस। वो किएवो वेरोना, हेलास वेरोना के बारे में एक फैक्ट बोलूंगा विद प्योर ऑब्जेक्टिविटी की, वो लोग एक सेरिया टाइटल जीत चुके हैं और बहुत जीते अच्छी हैं। टीम थी, उस पर शायद वीडियो और करेंगे। या और ये जब हेलास वेरोना जीती थी, वो आखिरी सीजन था जहां पे रेफरीज को रैंडमली असाइन किया जाता था। यस मतलब उन लोग पुल करते थे एक शीट से, रेफरी का नाम बाहर आता था, वो रेफरी जाके मैच मैच डे पे रेफरिंग करता था। जो अभी अनाउंस होता है ना पहले या कि ये रेफर करने वाला है, ऐसा सिस्टम नहीं था वो सब लास्ट टाइम नहीं जब है। हुआ था सरिया में। तब हेलास हाँ वेरोना सरिया जीती थी। यू कैन मेक या व्हाटएवर यू वांट टू मेक ऑफ इट, आई एम जस्ट गिविंग या यू द इंफॉर्मेशन। But I'm glad you asked this question. I'm या just या glad to see a different question also. Uh, yeah, sponsor he ये meant. Okay. पता नहीं, ये अजियो मिंत्रा में देख ले भाई। हाँ प्यूमा, जियो मिंत्रा भी और गुड या तेरे को दे और ओरिजिनल एक्चुअली प्रोडक्ट मिलेगा फॉर श्योर। सेल पे सेल आएगा जब उठा ले, तभी थोड़ा 30-40% डिस्काउंट मिलता है। या आई वाज अ किड व्हेन बेनिवेंटो स्पाल पलोरो लिवर्नो। भाई हाँ कितने क्लब्स जो हाँ मिसमैनेजमेंट की हाँ वजह से नीचे गए हैं। क्या हाँ। बोलने वाले थे आप अजय भाई, कुछ तो? मैं बोल रहा हूँ कि शिवम तू किड था, मैं तभी भी अडल्ट ही था, अभी भी अडल्ट हूँ। आई फील वेरी ओल्ड राइट नाउ। Yeah, Palermo is still in Serie B यार, but I know या they या also saw दे विल कम bankruptcy. बैक बिकॉज़ सिटी Yeah, फुटबॉल ग्रुप के अंडर है, तो दे yeah. विल कम बैक। कटानिया भाई, कटानिया भाई वो कैटानिया, तो सेरिया मेसिना, डी या द मेसी सिसिलियन डार्बी बिटवीन द थ्री, पेलेर्मो, भाई। कैटानिया एंड मेसिना। I hope we can make videos on all this in the या future. I really hope. या We'll close this. I know आपको भी जाना है, थोड़े comments फटाफट लेके यस हम लोग बंद यस करते यस यस। हैं। उनकी जितनी बात करो उतने। मोस्ट हेटेड क्लब किसका ये? सॉरी, डिड आई मिस समथिंग? सौरभ कौशिक। पता नहीं यार, आई गेस ही वापस डाल मेंट। दो, वापस डाल दो, वापस कमेंट या डाल दो। आई गेस ही मेंट ह्यूए, मतलब मोस्ट ह्यूए हेटेड हाँ बोलते हैं तो हो सब लोग सकता के है, दिमाग में हो वही आता सकता है कि ये वो एक क्लब होता था। नहीं है, अब वापस आ गया है, थैंकफुली। वापस आ गया। अमेजिंग क्लब। ये आपके लिए। ये इशू है क्योंकि बैंगलोर में बारिश हो रही है एंड मोस्टली फर्स्ट 2 days विल बी रेन्ड आउट। बट इंडिया, देख इंडिया सीरीज के लिए हाइप की जरूरत है नहीं। क्रिकेट है एंड आई थिंक वी आर कमिंग ऑफ अ हाइप। मैंने एक वीडियो भी किया इसके बारे में, इंडिया बांग्लादेश के बारे में, सीरीज रिव्यू का, जहाँ पे वी वर सो डोमिनेंट इन बोथ द टेस्ट मैचेस। वेरी गुड टू सी द या सेकंड टेस्ट मैच का अप्रोच, बिकॉज यू हैड ओनली 2.5 1.5 day of play, 2.5 days gone because of rain. Then on day 4, after India got Bangladesh, out for whatever,
उसके बाद रोहित शर्मा, यशस्वी, everyone just went on, gas ball mode, trying to win the game for WTC points. So जो World Test Championship है, आप बोलते हो कि it has got no value, it has value because that's a trophy that we would like to win. So good to see. Hype आएगा भाई, टेंशन मत ले. मुझे फोन आया है. I have to leave Yeah, yeah, in a bit. BCCI. We'll take Ajay, Jatin, we'll take a few Jatin was comments and close yeah, this. sure. Jatin was talking about Hellas as the most hated club. I अच्छा won't say हेलास, हाँ. most hated, but they're not that popular also in Italy to be the most hated. I get हाँ. what you mean. They're a bit obnoxious, हो सकते हैं owners and fans, but I think it's still UA takes the cake for that in general. And I'm saying this objectively. Again, फिर से बोलेगा इंटर फैन बोल but AC Milan का थर्ड किट लॉन्च 7-8K का है. अरे ये सब इतना मैं भी कोई नहीं स्पेंड करता है. That's what I'm saying. भाई तू स्पॉन्सर छोड़, take it with sponsor, you'll get it for cheaper prices. यार, I support UA in Serie A, not because of Ronaldo. I'm a Messi fan. अरे हाँ, रोनाल्डो है भी नहीं भाई क्लब में. Relax. मतलब I Good, yeah, like good, UA. good, good. That's fair. That's fair. चलेगा. Hockey league is back. Yeah, yeah. I It's am. good to see. Yeah, मैं इतना देखता नहीं, but slowly I'm getting into it, and what I'm hearing is it's a obviously very good thing. So I hope this works out. I will be I hope it following it. works out. Yeah, and obviously Pro Kabaddi League भी soon चालू होगा. वो तो Pro Kabaddi League is so popular because it connects so much with the rural masses Yeah. also. और उसका marketing भी मस्त रहता है. So More, I will more be watching. popular and more marketable than ISL. Yeah, easily. But you just saw that in 06 Italy versus Germany, Gilardino versus Del Piero. अरे भाई इसका तो जिलार्डिनो का इमेज खराब ही हो गया. इसमें तो वायलेंट सेलिब्रेशन, पता नहीं ये कैसे आ रहा है, बट वो वायलेंट का सेलिब्रेशन करता था. And he was a very very good player for Parma, for Milan. उसका इमेज खराब हो गया because क्रिश के लिए. मतलब he just started following. So that's what Van Hal said, and now Ineos is taking huge steps, and I want the old man to rest now. But यार देखो यार, I still feel your club has a long way to go. मतलब I still think you guys are not. You guys are run terribly. I'll be very honest. अच्छा, इंटर आप सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगे, ठीक है. That's where I took his comment. I took Jatin's comment. Penalty. इसकी ट्रोलिंग चल रही है. Genoa fan, wow. Yeah, he is serious about it. So, oh wow, Jaipur Pink Panthers since 17. Nice. Boy, I know. पुनेरी पल्टन. अरे भाई, मैं ऐसे किसी को मतलब यू मुंबा of course, but I know they're not doing well. You Mumba. Of course, I do kind of support them, but I know they're not doing well. So. Yeah, they're not doing well. Who are the most toxic fans? देख यार, हर जगह रहता है टॉक्सिसिटी. अजय भाई will say Lazio obviously. and Napoli fans from USA, English speaking Napoli fans बहुत टॉक्सिक है यार. क्या बहुत. I know what you're saying. Look, I can even take names of Twitter accounts, but वो मुझे करना नहीं है. But the thing is, कैसे सौरभ हर एक क्लब में होता है, but I would say primarily तुझे बिग थ्री में हर एक का मिलेगा because they are so successful at the end of the day. तो वो rivalry रहती है बिग थ्री में ज्यादा, but सब में है. थोड़ा sorry, Inter Milan is saying you Mumbai is our rival. Biggest rivalry in PK. Okay, fair enough. अब मेरे को इतना भी नहीं पता ज्यादा. I know a bit here and there. I do watch it here and there. So thanks for telling me. हाँ, वो अनूप कुमार क्या पर्सनालिटी थी. मतलब गॉगल्स पहन के आता, कुछ भी करता था वो. मतलब it's so good to see. Like PKL, what I really like is they packaged the sport so well ना. अरे आप टीवी पे देखते हो एक्सपीरियंस कितना कंप्लीट लगता है यार. Every arena is packed. They go to every arena. They have multiple games. It's so good to watch. मैं बोल रहा हूँ ना, ISL से ज्यादा मेरे को PKL का मार्केटेबिलिटी पसंद है यार. मतलब जिस तरीके से इन लोग they have reached out to tier 2, tier 3 cities and all. ISL has not even made it to tier 1 cities. Like you see Punjab FC playing in Delhi, stadium खाली है. You know, what else apart from like I would say the big three in Calcutta, Kerala Blasters, even FC Goa, the attendances have gone very. गोवा का तो अलग ही प्रॉब्लम है. गोवा का तो यार I know. But yeah, guys, I think last दो comment है लेके then because of the first comment अपन. Yeah. पुनेरी पल्टन फैन कोज मैं पुणे से हूँ and there are very few franchise जो चली है. पुणे वॉरियर्स बंद हुआ. अच्छा हाँ, I get what you mean. पुणे सिटी एफसी बंद हुआ. भाई पुणे सिटी एफसी से तो पहले शिवाजेन्स था, पुणे एफसी था. Those were more iconic clubs. Ajay will agree with that. शिवाजेन्स, पुणे एफसी, डीएसके वो ज्यादा आइकॉनिक थे. या आरपीएस तो आया भी 2 साल के लिए था. पुनेरी पल्टन बहुत. हाँ, पुनेरी पल्टन तो आई थिंक
Yeah, yeah. Uh, yeah, Ravi, I saw that news. मैड्रिड पर उसके बारे में वो अजय भाई के चैनल को रिस्क में नहीं डालना है मुझे सो नहीं नहीं, मत 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 मत। कृष्ण फ्रॉम सौरभ पुणे, अरे गुड टू वाह, सी। आवर चैनल इज नाउ आल्सो कनेक्टिंग पीपल। भाई हम लोग क्या फ्रेंडली लिंक्डइन एकदम बनने वाले लग रहे एकदम एकदम एकदम। हैं। But on that note, guys, I will close this stream. We'll be back. I'm so sorry, Saurabh. They're good to see. अपन लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे ये। या बट थर्सडे को आ जाओ कैल्चो चर्चा पे, हम लोग थर्सडे पे आ चर्चा जाओ या करेंगे अबाउट यूवे लाजियो एंड ऑफ कोर्स रोमा इंटर, बहुत कुछ या बिल्डिंग अप टू somebody सेrie A this somebody was weekend. asking for Anubhuti to be on a stream. Anubhuti is going to join us on Thursday. Anubhuti is So, joining us yeah, on Thursday. yeah, तो yeah. थर्सडे So 9 o'clock को आ जाओ। yeah, and just one last thing कि अजय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। He is on 1030 what exactly I forgot. 39। 1039 भाई कर दो कि सब्सक्राइब टू कैल्शियो चर्चा और होम ऑफ इटालियन फुटबॉल। आ जाओ यार उधर भी। नाउ आई सी स्लो प्रोग्रेस, थोड़ा बीच में स्टैग्नेशन हो गया है सब्सक्राइबर्स के एंड से। सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, डू वॉच द टोरिनो वीडियो वी मेड। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी ठीक है, यू कैन जस्ट वॉच इट एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो प्लीज देख लो यार एंड सपोर्ट अस एंड वी विल बी बैक ऑन थर्सडे। We'll be थैंक यू back अजय on भाई फॉर Thursday on हैविंग मी। कैल्चो चर्चा। कल मेरे चैनल पे एक दाविड डेहाया का वीडियो आ रहा है दैट आई रिकॉर्डेड विद कॉस्टो अबाउट हिज हाँ, रेनेसांस। सो अगर आप वाओ, मैन यूनाइटेड फैन हो तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो बिकॉज कॉस्टो एकदम इमोशनल होके श्योर बहुत, श्योर he is let his heart out and I think श्योर श्योर। this is for you। ओ फॉर्जा इंटर यार, आपका नाम अभी पता होता तो मैं वही, क्योंकि इंटर uh, इंटर बोल के क्या करूँ आपका। इफ यू आर कंफर्टेबल डू लेट अस नो योर नेम। बट या थैंक्स। प्रे फॉर ब्राजील डाउनफॉल। बाप रे, इसको ब्राजील पसंद ही नहीं है लग रहा है मुझे। बट आई वुड बी प्रेइंग फॉर रॉबर्टो मंचिनी इफ यू लाइक हिम, बिकॉज मुझे गंदी फीलिंग आ रही है कि ही माइट लूज हिज जॉब टुनाइट। he नॉट might अ lose फैन his ऑफ job। एनी, yeah, I'm not a fan of anyone losing their job, but Yeah, Roberto Mancini, I think he's finished as a coach. But yeah, on that note, I think thank you guys for joining in. ciao Keep ciao, supporting. good night। Bye.